Hello everyone, good morning. Am I audible? Okay. So good morning everyone. Let us start. I hope I'm clear. My voice is clear. Please confirm. ଶୁଭାଯାଉଛି? Good morning everyone. Okay. ଶୁଭାଯାଉଛି? Fine. So October 13 ରୁ October 26 ଯାହା ବି current affairs ଥିଲା ଆମେ cover up କରିବା. Okay. Sure. So these are the topics that we are going to cover today. GS1 ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି almost ଆମେ 3ଟା ଯାକ paper ର ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡା topics cover up କରିବାର ଅଛି because 2ଟା week ର topics ଆମକୁ cover କରିବାର ଅଛି. So ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ topics ଆମର ଅଧିକା ହବ. Okay. And please be ensured कि ଆମେ ଯାହା ବି topic discuss କରୁଛୁ ସବୁ important ଆମେ ଜାଣିଛୁ. You have seen the example in your OAS prelims exam this time as well, right? Okay. So GS1 ର India to expand trade agreement with 4 nation American groups. Now ଏଇ ଯୋଉ GS1 ର ଯେତିକି topics ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଏଟା GS1 ରେ କଣ ପାଇଁ ରଖିଛି because ଏଟା prelims perspective ରୁ important current affairs ଯୋଉଟା ଆମର prelims ରେ current affairs section ରେ ଯଦି ଆସିବ that is important. କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯେମିତି କି ଆମର geopolitics of rare earth elements ଆଉ ତମେ କହିପାରିବ ଏ ଯୋଉ India to expand trade agreement with 4 nation American bloc. এই ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମର international relations ରେ ଆସେ. ତ international relations ତ ଆମର syllabus ରେ ନାହିଁ. But still ଆମକୁ mains ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦରକାର ଆମର answer କୁ substantiate କରିବା ପାଇଁ. Also this will be important for prelims as well. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ miscellaneous topics ଗୁଡାକ ବି ମୁଁ current affairs of national and international importance ରେ ଭାବିକି ତାକୁ GS1 ରେ ରଖୁଛି. Sarthar prize, British Academy Book prize because ଆଜିକାଲି OPSC କିଛି ବି ପଚାରି ଦଉଛି. And ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ଆମେ critical mineral mission ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି upcoming years ରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ରଖିଛି. Good morning ସୁଜିତ, good morning ସନାୟା. And Commonwealth Games India host କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛିଟା discussion କରିବା. GS2 ରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା PM ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା because କେରଲା ତାକୁ join କରିଛି ଆଗରୁ join କରିନଥିଲା କେରଲା but now Kerala has joined the PM ଶ୍ରୀ ତ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ. କେରଲାର ଆଉ ଗୋଟେ news ହଉଛି November 1 ରେ it will be the first state in India to be free of extreme poverty ହେଲା. ତ extreme poverty ମାନେ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଜାଣିବା. A commission of omissions ଗୋଟେ editorial ଆସେ
regarding National Commission for Minorities. It is an important article मते लागिला हमको टिके ता विषय भी पढ़िया को पढ़िबो. India's cough syrup tragedy विषय ଆମେ last class पढ़िथिलु ता related गोटे एडिटोरियल आछि week रे हैला. So I thought to include that as well. ज्ञान भारतम मिशन कौन ता विषय टिके देखिबा. Failure to meet climate targets does not make COP irrelevant. एथर प्रीलिम्स रे भी तमरो एनडीसी विषय रे क्वेश्चन आस्तेला, COP विषय रे क्वेश्चन आस्तेला. तो जेकोनोसी भी COP रिलेटेड न्यूज जदि आसुची दैट बिकम्स हाईली इंपोर्टेंट फॉर अस. ओके. साइंस एंड टेक हमें जानछु केते इंपोर्टेंट. चंद्रयान 2 गोटे ऑब्जर्वेशन करिछि रिसेंटली, तो सेटा भी आस्तेला ता विषय रे पढिबा. जेतो हम एआई कथा कहूछु, एआई रिलेटेड जेति की भी एडवांसमेंट अच्छी सब हम पे इंपोर्टेंट. मेंस पर्सपेक्टिव रे हो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रे हो, राइट. तो एई जो दिले जिनस हमरा रहला एआई रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड भी हे परिबो एंड एआई रिलेटेड भी हे परिबो, माने टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी हे परिबो. Okay, so these are all the topics that we are going to discuss today. Clear? So we'll start with Kerala joins PM Shri. So ଆମେ ଜାଣିଛୁ PM Shri ରେ କେରଲା ନଥିଲା, ତାମିଲନାଡୁ and West Bengal ए पर्यंत जॉइन करना. तामिलनाडु ଆଉ West Bengal ए पर्यंत PM Shri स्कीम रे जॉइन करना. ओके. बट रिसेंटली केरला भी नथिला, तो केरला भी रिसेंटली जॉइन करिछि. तो कोन ए PM Shri आमे तो बहुत क्लास रे एनईपी विषय कथा हिछु, हम बरफ कभी विषय रे हम कथा हिछु, राइट. So say Viktaru, it will be very important scheme. So under the PM Shri scheme, states have to bear 40% of the project expenditure like other central schemes. So far, 12,400 schools from primary to higher secondary 670 डिस्ट्रिक्ट रे ए सब 12,400 स्कूल तमरो पीएम श्री अंडर रे आसीची, जो थ्री की कोन हुए स्टेट माने तमरो 40% बियर करिवे, आउ जेमती अदर सेंट्रल स्कीम्स गुडा कहला, बाकी तमरो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करिवे हैला. तो स्टेट रो सेंटर दी जनकर फंडिंग इतरे रुहे, राइट. एंड जदि हम देखिबा ता रिलेटेड न्यूज कोन पे आस्थिले, केरला तो जॉइन कला बट केरला किछिटा केरला किछिटा फाइनेंशियल असिस्टेंस मागिछि अंडर द पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. Just a second. Here's what I found online. Okay. I hope I'm clear. Sorry for the interruption. It's a network issue. Am I clear now? Please confirm if I'm audible and clear. Okay. So Kerala financial assistance magichi under the Pradhan Mantri Schools for Rising India. PM Shri ro full form भी मन रखिथिबो, full form भी पचारुची. श्री माने हला Schools for Rising India. हला.
So what is this PM Shri scheme? It was launched in 2022. It is a centrally sponsored initiative. तो तुमको बारंबार कही centrally sponsored quota, central sector quota, right? And it is aimed over upgrading 14,500 existing school ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହିସାବରେ ଶୋକେସ୍ କରିବାର ତାର ଏମ୍ ରହିଛି ଅଣ୍ଡର ଦ NEP 2020 ତ ଯେତିକି ବି ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଛି ହେଲା ପାଖାପାଖି 14,500 ସ୍କୁଲ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ହିସାବରେ ବନେଇ ପାରିବା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା ହେଲା ସୋ 2022 ରୁ 26-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସ୍କିମ୍ ଟା ଚାଲିବ ତାପରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଇଯିବ ତାକୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ହେଲା ତ ଇନିशियली ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସ୍ପନ୍ସର ନିହାତି କରିବ କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ନିହାତି ଦବ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ପିରିୟଡ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇନିशियल ଫେଜରେ ସେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ କରିବ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଏଟା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ରହିଯିବ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଯେତିକି ବି PM ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ହେଇଛି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହବ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଆଗକୁ ନେବେ So what are the key features of this PM Shri schools? Modern, well-equipped, smart classroom. ହେଲା ଯେମିତି ଆମର 5 ଯୋଉ ଆମର ଓଡିଶାରେ ବି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଟାଇମରେ 5T ସ୍କୁଲ୍ସ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଇଏ ସିଏ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ ବନେଇବା ଇଏ ସବୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ଗଫଲାତି ତ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇ ଭିତରକୁ ପଶିବାନି ବଟ୍ PM ଶ୍ରୀ ଇଜ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ଯୋଉଗୁଡାକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ କେମିତି ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡସ ଲଗେଇ ପାରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ସ ବନେଇ ପାରିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଆଉ ଅଟଲ ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ୍ସ ବନେଇ ପାରିବା ସେଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ ହେଲା ତାପରେ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ନଲେଜ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ସ ଗୁଡାକ ହୁଏ ତ ତାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଯାହା ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ସେଟାକୁ କେମିତି ରିଅଲ ଲାଇଫ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଗ୍ରୀନ ଇନିସିଏଟିଭ ନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛୁ ସୋ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି लागू କରିପାରିବା ୱାଟର କନଜର୍ଭେସନ ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କୁ ୟୁଜ କରିବା ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡାକରେ वेस्ट रिसाइक्लिंग करवा तो PMश्री स्कूल रो मेन एम्स गुड़ाक एगुड़ाक है जदि तुम गोटे स्कूल को PMश्री स्कूल कहूच देन ए सब फीचर्स तार निहाती रहिबा दरकार गुड मॉर्निंग सुनीता एक्सपीरियंशियल इंक्वायरी ड्रिवन एंड लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी है तो लर्नर सेंटर माने जो स्टूडेंट्स माने थे से माने केमिति तांको ऊपर फोकस रहइबो खास करिका है से माने केमिति जिंस गुड़ाक बहुत इजिली क्रिएटिव वे रे बुझी परिबे ओके सो एज आई सेड फंडिंग पैटर्न केमती रहइबो तमरो 60% स्टेट दबो सॉरी सेंटर दबो आ 40% स्टेट दबो हैला बट आफ्टर किछि टाइम परे एटा स्टेट रो दायित्व रखि रहइबो ताकू से केमिति आगु को न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स अंडर माने हमर जम्मू एंड कश्मीर रे 90% फंडिंग सेंटर रहइबो 10% से स्टेट मान कर रहइबो आ जेतिके भी यूनियन टेरिटरीज अछि सेथिरे 100% सेंट्रल फंडिंग रहइबो बुझि पालो PMश्री स्कूल रो फॉर एग्जांपल जदि हमर ओडिसा रे बहुत गुडा PMश्री स्कूल जदि होउची तो सेथिरे 60% फंडिंग सेंटर रहइबो 40% हमर ओडिसा रे रहइबो ओके तो केमिति सिलेक्ट करा जिवो से स्कूल गुडाको गोटे कॉम्पिटिटिव चैलेंज मोड रे तीनिटा स्टेज रे स्कूल्स गुडाको सिलेक्ट करा जिवो कि को स्कूल गुडाको हमरो रहिबार कैपेबिलिटी अछि PMश्री अंडर रे ओके सो प्रथमे तो निहाती स्टेट और यूनियन टेरिटरी एग्री करिया दरकार तो जेमति कि मु तुमको कहली तमिलनाडु एंड वेस्ट बेंगल दे आर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ दिस PMश्री स्कीम ओके केरला भी नथिला बट केरला रिसेंटली जॉइन करिछि ओके सो दिस इज व्हाई वी आर स्टडीइंग इट सो प्रथमे तो तमर स्टेट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट भितर गोटे MOU साइन हबो तापरे एलिजिबिलिटी स्कूल्स माने एलिजिबल स्कूल्स गुडा को आइडेंटिफाई करा जिवो बेस्ड ऑन मिनिमम बेंचमार्क जहाँ भी डाटा रही UDISC प्लस डाटा रही से हिसाब रे को स्कूल एलिजिबल अच्छी सिलेक्ट करा जिवो फाइनली गोटे चैलेंज भी सिलेक्शन हबो जो थे कि स्कूल्स को ए जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया किछि तांकर रहिछि सेटा को मीट करिया को निहाती पड़िबो ओके फिजिकल इंस्पेक्शन हबो अथॉरिटी माने जाइकी विजिट करिकी देखिबे वेदर दे आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम और नॉट तापरे फाइनली हबो हैना So some states, including Punjab and West Bengal, have refused to sign the MOU.
while Tamil Nadu and Kerala have shown conditional willingness. Conditional willingness माने किछिटा कंडीशन रही तमिलनाडु एंड केरला रो तमे जदि हमर ए कंडीशन सब मानिबो देन ओनली हमें पीएम3 जॉइन करिवु जेमिति ओडिसा आगुरु हमरो आयुष्मान भारत जॉइन करू नथिला जेतबळे नवीन पटनायक गवर्नमेंट थिला ओके तो सेमती इट इज ऑन द स्टेट्स कि ताको एक्सेप्ट करिवो कि न करिवो किछिटा कंडीशन सेमानकर रहिछि as a result the central government has stopped funding under the समग्र तो जो स्टेट्स माने जॉइन करू नाहंती ना जो स्टेट्स माने पीएमसी को जॉइन करू नाहंती सेंट्रल तांकर फंडिंग स्टॉप कर दोची समग्र शिक्षा अभियान ऊपर हैला एंड जदि से माने एमओयू साइन करू नाहंती कि से माने जदि राजी हो नाहंती तमरो पीएमसी रे मिसिया पे तो सेई केस रे सेंटर पाखरे पावर अछि कि से कोन समग्र शिक्षा अभियान रो फंडिंग टाको भी रोकी दबा बहुत सारा जिंस फंडिंग रे भी से रोकिबार कैपेबिलिटी रही तार ओके सो जदि गोटे जिनस आसिला ई जिनस पीएमसी अंडर रे ताको प्रॉपर मेंटेनेंस भी दरकार प्रॉपर मॉनिटरिंग भी दरकार तो स्कूल क्वांटिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क गोटे फॉर्म हबो माने हेछि ऑलरेडी एसक्यूएस जे देखि तमर अकाउंटेबिलिटी और कंटीन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट होछि कि नै सेटा मॉनिटर करी ओके सो जेतेबेले आमे एजुकेशन कथा कहूछु बिकॉज एजुकेशन रे हमर एसए आसीवर प्रोबेबिलिटी थाए तमर जदि गोटे एसए आसिला एजुकेशन टॉपिक ऊपर तमने कोन लिखिबो करंट अफेयर्स रे तम मानको कोन लिखिया को पड़ी पारे तो ऑब्वियसली तुमको ए स्कीम्स गुडा को विषय निहाती लिखिबो एनईपी विषय तो निहाती लिखिबो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी परक सर्वे विषय आम इन डिटेल पढ़ी ता विषय तार रिपोर्ट गुडा देखिबो तार रिपोर्ट गुडा को आमे सेठी मेंशन करिबा एसए हो कि जीएस पेपर रे एजुकेशन रिलेटेड किछि भी जिंस आसिला देन आमे एनईपी विषय तो निहाती लिखिबो परक सर्वे विषय निहाती लिखिबो हैला किछि छोटो इंट्रोडक्शन रहि जिवो एनईपी कोन 5+3+3+4 रो स्कीम रहउची एतिकी एजेस मान को मिनिमम तांकर क्वालिटी माने एजुकेशन हम प्रोवाइड करिवार अछि ए सब जिंस जहा भी लिखिबो परक सर्वे हुए परक सर्वे रे को स्टेट केमिति परफॉर्म करिछि सेही जिंसटा को लिखिबो ओके एंड जेमति हमें देखिथिलु कि पीएचडी एनरोलमेंट रेशियो फीमेल मान पर अधिक अछि से सब जिंस ए सब जिंस रहइबो सिथरे किछि भी जदि ऐसे टॉपिक आछि कि तमरो जीएस रो पेपर एजुकेशन रिलेटेड किछि क्वेश्चन आछि तो ओके ता सहित आमे समग्र शिक्षा अभियान विषय लिखि परिबा जेमति म कहली कि जदि को स्टेट राजी होनी पीएम श्री अंडर जॉइन हबा पे देन सेंटर ऑफ पावर अछि कि समग्र शिक्षा अभियान रो फंडिंग ता से बंद कर दे परिबो हला एंड तमे मिड डे मील स्कीम विषय लिखि परिबो आमे जदि हेल्थ को जोड़ीबा एजुकेशन को हेल्थ सहित जदि आमे जोड़ीबा देन सेठी आमे पीएम पोषण विषय लिखि परिबा मिड डे मील स्कीम विषय लिखि परिबा तो तार एम बेसिकली कोन न्यूट्रिशन को इंप्रूव करिवो स्कूल एनरोलमेंट भी बढ़ौची और ड्रॉप आउट रेट्स भी बढ़ौची हैला तो इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करूची ना ए सब जिंस हमको लिखिया को पड़िबो जतबे हम गोटे एसे लिखुछु बुझि परछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम विषय भी हमें लिखि परिबा गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करे एटा जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करे एंड ऑल ओके देन ए सब जिंस कोन ताकर करे छोट छोट जिंस पॉइंट्स गुडा को बेटी मेंशन कर देछि हैला तो ए सब जिंस हमर रहबे जतबेले हमर पीएम श्री विषय पढुछि कि एनईपी विषय पढुछि कि एजुकेशन रो किछि भी जिंस पढुछि हम ए सब जिंस सेठी मेंशन करि परिबा पीएम ई विद्या 2020 रे लॉन्च हेतिला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जोथरे कि तमरो डिजिटल एक्सेस रहइबो ऑनलाइन तमे वीडियोस देखि परिबो लेक्चर सुनि परिबो देखि परिबो से सब जिंस हम एठी कर परिबा ओके स्वयं पोर्टल अछि हला स्वयं रो फुल फॉर्म कोन बाय द वे स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स तो जोथरे कि हमको ऑनलाइन कोर्सेस गुडा को प्रोवाइड करा जाय ता रिगार्डिंग जदि हम सेटा कंप्लीट करू हमको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाय ये सब जिंस हम मेंशन करि परिबा एजुकेशन रिलेटेड किछि पढिला आई होप आई एम क्लियर हमरो क्वेश्चन हमरो न्यूज़ बस एतिकी थिला कि केरला पीएम श्री जॉइन कला सो पीएम श्री जतबे जॉइन कला तो पीएम श्री रो कोन तारो फीचर्स रही छै हमें पढिलु को स्कूल गुडा को हमें पीएम श्री रे रखि परिबा को टाइप रो एटा स्कीम ता हैला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एटा गोटे तो ये सब जिंस हमको छुट्टी किनके करिकी देखिया को पड़िबा ता सहित आउ कोन हमर एजुकेशनल स्कीम्स अछि अपार्ट फ्रॉम द पीएम श्री एनईपी तो अछि एनईपी अंडर ए सब जिंस आसी परिबा हमर हैला मिड डे मील स्कीम तमे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जतो हम जेंडर कथा कहबू तमे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय लिखि परिबो
न्यूट्रिशन कथा कहले मिड डे मील स्कीम विषय लिखि परिबो हला ताको केमिति हमें अलगा अलगा एस्पेक्ट रे जोड़ी परिबा सेटा तुमको देखिया को पड़े ओके चलो नेक्स्ट हला फेलियर टू मीट क्लाइमेट टारगेट डज नॉट मेक कॉप इरेलेवेंट तो एथर तो हमर प्रीलिम्स रे भी क्वेश्चन आसिला एनडीसी विषय रे चारटा स्टेटमेंट आसिला बहुत कंफ्यूजन भी थिला हां कि नहीं तो कॉप विषय रे भी हमें भी आगुरु पढ़ी छु कॉप कोन यूएनएफसीसी अंडर एटा आसे हला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 आई मीन हमर कॉप 30 नेक्स्ट हबार अछि ए नवेम्बर हबार अछि राइट तो सेति पे ता पूर्वरु इंडिया रो कोन कंट्रीब्यूशन माने तारो ऑलरेडी हित से देई सारी जी आ फ्यूचर तारो टारगेट्स कोन अछि सेटा ऑलरेडी हमें गोटे न्यूज आर्टिकल पढिथिलु एबे एटा आसला गोटे आर्टिकल आस्थिला फेलियर टू मीट क्लाइमेट टारगेट्स डज नॉट मेक कॉप इरेलेवेंट कोन पे एटा आर्टिकल आस्थिला भाब करछो तमे एक्चुअली कोन हेची तमरे यूएस जानिथिबो जदि तमे जानिनो एटा गोटे जानिथिबार अछि तमको यूएस विथड्रॉ कर देछि फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट तो आमे पढिथिलु पेरिस एग्रीमेंट रो ही हमर एनडीसी रे स्टार्ट हैला 2015 हैला दैट मींस प्रति 5 वर्ष रे तमरो किछि जेतिकि भी कंट्रीज अछंती से माने तांकर टारगेट्स देबे नेक्स्ट 5 इयर्स रो नेक्स्ट 10 इयर्स रो टारगेट देबे कि से माने क्लाइमेट चेंज ऊपर नेक्स्ट 5 वर्ष रे कोन करिवे कोन ना एंड से टू यूएस विथड्रॉ कर देछि पेरिस एग्रीमेंट हैला तो सेति पे एटा गोटे आमे कहि परबो डिप्लोमेटिक इश्यू रे हेजी कोन पय यूएस विथ यूएस तो चलो अबे कोन करूछि सब आडू विथड्रॉ करूछि क्वाड्रो भी माने सब आडू तार प्रॉब्लम चली छी चलो ठीक अछि तो अबे जो अपकमिंग कॉप 30 हबार अछि नवंबर रे जोटा शेड्यूल अछि कोठी हबार अछि बाय द वे बेलेम ब्राजिल हला बेलेम गोटे जगार नाम ब्राजिल रे सेठी हबार अछि so it comes amid heightened climate anxiety the 1.5 degree celsius target slipping away तो एटा गोटे टारगेट थिला जोटा कि फुलफिल एपर्यंत हेनी आ आ विषय पढ़िबा हमें नो डाउट यूएस विथड्रॉ कर देछि पेरिस एग्रीमेंट रे एंड द ग्रोइंग skepticism over the multilateral climate processes ओके तो हम ऑलरेडी पढ़िथिलु कॉप कोन हैला कॉप 29 हमरो कोडी हेतला 30 कोडी हबार अछि सब जिंस हम ऑलरेडी पढ़िलु सो बेसिकली हमरो कॉप 30 जो हबार अछि तारो मेन काम कोन हैला मेन तारो टारगेट अछि फाइनेंस ऊपर फोकस रहिबो हमें जानि छु कि सब कंट्रीज माने एटा को फोकस करछन कि प्रॉपर फाइनेंस मिलिले ही से माने ए टारगेट्स को फुलफिल करि परिबे अदरवाइज ये सब हबारे तीरंदाजी कला भया काम गोडा हबो तो फाइनेंस केमिते हमें टारगेट करिबा दैट इज द मेन एम ऑफ कॉप 30 ओके न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल एनसीक्यूजी कौन एटा डेवलप्ड नेशंस आर एक्सपेक्टेड टू स्केल अप द क्लाइमेट फाइनेंस जो माने ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस अछंती से माने स्केल अप करिवे क्लाइमेट फाइनेंस को बाय 2035 अप फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग बिलियन गोल तो मेन हैला डेवलपिंग नेशंस गुडा को फोकस माने टारगेट करूछन कि डेवलप्ड नेशंस माने ठीक अधिक फाइनेंस प्रोवाइड करंतु the focus is now on allocation efficiency between mitigation and adaptation तो सेमाने जदि हेल्प करिवे डेवलप्ड नेशन जदि डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करिवे देन सेही केसेस रे फाइनेंस ऊपर हम टिके भाबी परिबा बाकू टू बेलम रोडमैन बाकू होउची हमर अजरबैजान जोटी तमरो हिथिला कॉप 29 हैला तो तार रोड मैप गोटे हमें ए वर्ड टा बारंबार तमे यूज करूछो देखुछो ए वर्ड टा तो जदि किछि सुनते आंसर आसे क्लाइमेट चेंज ऊपर ए जिंस निहाती लिखिबो बाकू टू बेलम रोड मैप टू ट्रिलियन माने कोन जोटे प्रपोज्ड रोड मैप बना हेची जोथरे कि से एम करूछु टू मोबिलाइज ट्रिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस बाय 2035 थ्रू पब्लिक प्राइवेट कोऑर्डिनेशन हैला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थ्रू रु आ इनोवेटिव ग्रीन इंस्ट्रूमेंट थ्रू रु केमिते हमें क्लाइमेट फाइनेंस को इम्प्रूव करि परिए बाय 2035 regional priorities the amazon and beyond hosting cop in belem which is a gateway to the amazon belem जोटा ब्राजील रो अछि that is a gateway to the amazon माने हमर जो मगुल ऑनलाइन से amazon मोबाइल तबे I hope तुम जान जो amazon बेसिन माने में कोटा पहुंच so that underlines brazil's intent to integrate forest conservation वो जगह एटा होउची कॉप 30 हमरो ब्राजील रे होउची हैला ब्राजील रो खास करके हमरो बेलेम रे होउची तो बेलेम रे दैट इज नोन एज द गेटवे टू द amazon हैला
तो जो अमेजन बहुत हमर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया तमे जानि पारथिबो लार्जेस्ट बेसिन भी हमें ताको कहू हला नाइल नदी हमर से सब अछि सेठी सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऊपर फोकस रहउची बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन ऊपर फोकस रहउची एंड इंडिजिनस पार्टिसिपेशन इन क्लाइमेट पॉलिसी ए सबु छड़ा फाइनेंस तो निहाती टॉप प्रायोरिटी केमिति फाइनेंस हमें अधिका एक्वायर करि परिबा focus on just transition and carbon markets. Developing countries are set to push back against the European Union's carbon border trade adjustment mechanism, arguing for climate equity and fair trade while promoting voluntary carbon markets and green industrialization. कौन रिलेवेंस रही जो मल्टीलेटरल क्लाइमेट प्रोसेस आम कहूँ बिकज मल्टीलेटरल कौन पे बहुत सारा कंट्रीज इनवॉल्व अच्छा तो समस्त दायित्व रही प्रति एंड से भितर गोटे इंपोर्टेंट जिनस कि यूएस विथड्र करदेला पेरिस एग्रीमेंट है जो तुम एटा गोटे जियोपॉलिटिकल इश्यू भी हो गला COP provides a stable platform where global climate governance can continue through dialogue, consensus, and transparency. है तो नो डाउट जदि भी यूएस विथड्र करदेला बाकी कंट्रीज भी अच्छा है तो किसी असुविधा सेमिति न हो पारे बट निहाती गोटे जियोपॉलिटिकल रिफ्ट तो आम ये देखा पाउछु एजेंडा सेटिंग पावर कॉप डिबेट्स इवन विदाउट अनएनोनिमस आउटकम्स shape national and corporate climate strategies. For instance, ଯେମିତି fossil phase ବିଷୟରେ discussion ହୁଏ ହେଲା ତ ଏ ସବୁ discussion ଗୁଡାକ କାହାକୁ prompt କରେ ଗଲ୍ଫ ନେସନ କୁ promote କରେ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର renewables ମାନଙ୍କୁ diversify କରିବେ diplomacy beyond politics the presidency acts as a neutral convener insulating negotiations from political shocks and restoring trust among nations so ଆମେ ଏଠି କଣ पॉलिटिक्स टाकू छाडिकी हमको डिप्लोमेटिकली टिके भाबियाको पड़िबो कि आको केमती हम यूज करि परिबा साउथ साउथ कोऑपरेशन को बिल्ड करिया पय जदी भी यूएस तमरा विद्रो करूची बट जेति की भी हमरो साउथ एशियन रीजन्स गुडा को अछन्ते सेमान सब एथरे इन्वॉल्व अछन्ते हमरो मेन वर्तमान फोकस कोन तमरो जो हेइथला एससीओ समिट हला कि ब्रिक्स समिट तार मेन फोकस सब बळे थिला केमती हमें ग्लोबल साउथ टाको इंप्रूव करिबा राइट सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ को इंप्रूव करिबा तो से केस रे यूएस विथड्रॉ कर देला इज नॉट अ बिग थिंग बट यस जेतो हमें फाइनेंस बिसर चाहूथलु कि डेवलप्ड नेशंस गुडा काम गुटे के बेसी फाइनेंस करंतु सेटा टिके असुविधा हे पारे अदरवाइज देखिया को गले साउथ साउथ कोऑपरेशन जदी अछि देन आउट टिके हम एटा बेटर परफॉर्म करि परिबा हला Catalyst for market and policy shifts. COP, Conference of Party Outcomes, influence the global financial markets. आरो जहाँ भी आउटकम अच्छी इंडिया जिमती आम इंडिया रो इकोनॉमी को भी रिलेट कर परिबा ना इंडिया रो इकोनॉमी बूस्ट केतोळे हबो जदि आमे हमरो स्कोप टारगेट टाको सक्सेसफुली मीट अप करिबा देन वी हैव चांसेस कि आमे यू नो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज हमें पाई परिया बाहरु हैला आमे कौन पे वर्तमान सोलर पावर ऊपर एते फोकस करू जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सूर्य घर योजना ये सब कौन पे सब आमे करू क्लाइमेट चेंज अगेंस्ट एक्ट करिया पे ए सब जिंस कले हमर इकोनॉमी तो बूस्ट हबो ही हबो बाहर हमको ऑर्डर्स मिलिबो सोलर पैनल्स बनेया पे जदी आमे आत्मनिर्भर भारत कथा कहूछु आमे निजे जदी सोलर पैनल्स बनेलु हमको बाहरु माने तमर कोन आमे एक्सपोर्ट भी करि परिबा से सब जिंस गुडा ए सब जिंस कले हमर इकोनॉमी बूस्ट निहाती हो हला तो सेथि पे हमर कॉप ता कोन पे इंपोर्टेंट जदी क्लाइमेट टारगेट मीट न भी होची कॉप ता तापा इररिलेवेंट हे जाउन ए आर्टिकल पूरा ता विषय डिस्कस करी छी हला ए आर्टिकल टा को वर्तमान डिस्कस करू जे जहां भी कहछन बुझपलो व्हाट आर द लाइकली आउटकम्स ऑफ कॉप 30 एंड तमरो वाशिंगटन विथड्रॉ कर देला पेरिस एग्रीमेंट तो कोन कॉप तार रिलेवेंस लूज कर दोची कि नहीं बहुत यूएस विथड्रॉ कर देले भी बहुत सारा हमर ग्लोबल साउथ कंट्रीज अछंती हैला जहा को वर्तमान एटा बहुत इंपोर्टेंट यूएस को इंपोर्टेंट न हे पारे बट हमको सेरा पे सेरा बहुत इंपोर्टेंट हैला बिकॉज अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट टारगेट्स भी हमर बहुत सारा जिंस रोची ग्लोबल साउथ रो कोऑपरेशन हम बिल्ड अप करि परछु सेठी राइट आ बॉन मीटिंग हेतला ए वर्ष जोथरे कि several organizations they signed a letter demanding reform of the international climate negotiations under the UNFCCC हैला
सो रिफॉर्म तो दरकार रिफॉर्म तो निहाती दरकार ता रिलेटेड ऑलरेडी मीटिंग गोटे हेइथिला ए वर्ष बॉन मीटिंग हेइथिला जोथरे कि सेमाने रिफॉर्म विषय रे कथा हेइथिले कि यूएनएफसीसी को टिके रिफॉर्म विषय रे कथा बाको पड़िबो बिकॉज जित्ते कि हमर टारगेट एते अधिक हम एक्सपेक्ट करूछु से हिसाब रे हमको फाइनेंस मिली पाउनी तो ता विषय रे टिके रिफॉर्म आने को पड़िबो ओके ये सब जिनस चली कथा बार्ता से सब जिनस हमको इंपोर्टेंट हे होछ बाय द वे ए जो कोन मु कहली तुमको এই ଜିନିଷଟା 1.5 डिग्री सेल्सियस रो डिबेट टा कोन बेसिकली सिंबॉलिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस कोन ए जो 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट इज नॉट मेरली साइंटिफिक माने कोन कहले एग्जैक्ट नंबर हमको एते की चेंज करियर अछि सेमति किछि साइंटिफिक नाही इट इज पॉलिटिकली एंड एथिकली बाइंडिंग रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल एक्शन फॉर क्लाइमेट जस्टिस हैला एक्सपर्ट कहउचंदी कि जदि आमे एतिकी टेम्पररीली एतिकी आमे एक्सेप्ट करि भी दोछु आ किछिटा टाइम पर आमे ता तळकु पळे भी आसछु पण सेमतरे किछि असुविधा हबो नाही हैला बिकॉज़ फ्यूचर आमे एट द एंड पळे आसीबो मोर इंपरेटिव फॉर वल्नरेबल नेशंस माने जोडा को बहुत वल्नरेबल कंडीशन रे अच्छा abandoning the 1.5 degree Celsius would signal surrender for small island states and the least developed countries. है and exacerbating global inequality. जो मैंने अति vulnerable condition रे जो nations गुड़ा को अच्छांती सेमान को effect पके परिबो जदि तमे targets टाको reach करूनो otherwise जो मैंने हमारा normal इंडिया को ये सब एते फरक पकेबनी because at the end से मैंने आसी जीवे से target है IPCC रो guiding rule कोन The upcoming 7th assessment report is expected to reinforce this target as non-negotiable, urging governments to align national budgets with carbon neutrality. है तो national रो जो हमर budget होची जो कोनोसी भी कंट्री रो हो ताको हमकु टिके फोकस करे को पड़िबो कार्बन फुटप्रिंट कार्बन न्यूट्रलिटी आ ऊपर भी हमकु टिके बजट रखिया को पड़िबो हैला एटा भी से सजेस्ट करूछन and psychological impact of persistence. Retaining the 1.5 degrees Celsius benchmark sustains collective motivation, forcing nations and industries to innovate faster in decarbonization. तो कार्बन कंटेंट आमे केमते कम करि परिबा सेटा सब कंट्रीज मानकर तमरो दायित्व रहउछि ओके सो व्हाट आर द challenges बेसिकली जो आमे मल्टीलैटरलिज्म कहउछु यूएस तमरो विथड्रॉ कर देला तो चैलेंज कोन चैलेंज हला कि प्रोग्रेस सब कंट्री रो समान हो नाही इंडिया बहुत आगे हे जाउछि आमे तमे ऑलरेडी पढिथिबो क्वेश्चन भी सेमते आस्थिला कि हमरो जो टारगेट देइथिलु 2025 रो जो टारगेट देइथिलु ताको ऑलरेडी आमे और 2030 रो जो टारगेट देइथिलु ताको ऑलरेडी आमे बहुत आगुरु कंप्लीट कर देलु हैला कि 2025 रो टारगेट आमे 2024 रे ही कंप्लीट कर देलु सेमते आमे कहि परिबो बट किछिना कंट्री सांगरो टारगेट ताको कंप्लीट करि करना सो दैट इज द one challenge climate finance गोटे challenge मु तो तुमको कहली कि finance जति हमको दरकार सेति मिली पाउनी that is the challenge finance deficit and inequity okay climate fatigue and political volatility with slow progress and economic pressures public and political commitment to decarbonization is wavering in several economies हैला स्लो जो हमरा नॉर्थ साउथ डिवीजन हे जाउछि तो एमाने टिके अलगा तांगर रहउचंती एमाने अलगा रहउचंती कोऑपरेट करिके रहउचंती नो डाउट बट ए जोगु ना तमरो प्रोग्रेस स्लो हे जाउछि आ इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड होछि इकोनॉमिक प्रेशर कोन पे बिल्ड होछि बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंसिंग एज आई सेड तो सब बोली बाली कि से फाइनेंस ऊपर आछि हैला तो सेति पे कॉप 30 रो मेजर तो हमरो निहाती रहइबो कि फाइनेंस ऊपर से माने कथा करबे जदि ए जिंसटा सॉर्ट आउट हे गला हमरा ए सब चैलेंजेस गुडा को भी धीरे धीरे मीट अप हे ओके इम्प्लीमेंटेशन गैप कोन एनडीसी जो नामे पढ़लो ना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दैट लैक द बाइंडिंग एनफोर्समेंट and adaptation projects face poor monitoring and underfunding again it comes towards the financing and underfunding hochi poor monitoring hochi scientific alarm versus political inertia the world is on track for 2.7 degrees celsius warming by 2100 threatening irreversible ecosystem collapse even as politics will lag behind space तमे जो politics करूछो बुझी पारु नांदी कि हमरो एट द एंड टारगेट होची कोन जो अलार्मिंग रेट रे हमरो
ग्लोबल वार्मिंग होची क्लाइमेट चेंज होची ताकू हमको कमेइबार अछि ना कि हमें एते को पर्टिकुलर कंट्री को फोकस करूछु कि नो डाउट हमें माने एमती कहि परिबानी कि हमें इंडिया को फोकस करूछु इंडिया रो इकोनॉमी बूस्ट हबो बिला हमें सब करूछु नो हमर मेन टारगेट हला एनवायरनमेंट राइट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करा जिवो तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिया पे सब जिंस हेछि बुझिपालो आ तमे जदि सेथरे पॉलिटिकल जिंस गुडा आनिबो देन आउ कोन करबे सो दैट इज द चैलेंज कि जो पॉलिटिकल प्रेशर टिके अधिका पळे आछि रादर देन द साइंटिफिक अलार्म जोटा हमें जोथि पई सब जिंस स्टार्ट करा जायथिला ओके सो रिफॉर्म कथा मु कहली कि रिफॉर्म विषय रे कथाबार्ता तो ऑलरेडी हेतिला बॉन कॉन्फ्रेंस वी एक्सपेक्ट कि आमर कप 30 रे भी आमे रिफॉर्म विषय कथा हबो एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड तो चैलेंजेस हमें पढिलु कोन असुविधा होची कोन चैलेंजेस रोची आ वे फॉरवर्ड ता निहाती दरकार तमरो को भी क्वेश्चन रे जदी आंसर दोछो एटा निहाती दरकार वे फॉरवर्ड कोन करि परिबो तमे कोन सजेशन दोछो तो रिफॉर्मिंग प्रोसेस दरकार सीओपी रे हला प्रथमे त हला दे शुड अडॉप्ट फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स ओके माने जी जार इच्छा अछि से रहू जार इच्छा नहीं से जाऊ सेमती किछि बाध्यतामूलक रहूनु समस्त पाखरे फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग रहबा दरकार ओके सो जदि सेमती हुए तो हमर जो स्लो प्रोग्रेस जो होची ना ताकू हमें बंद करि परिबा रैपिड प्रोग्रेस और रैपिड इंप्लीमेंटेशन हे परिबो नेक्स्ट हला स्ट्रेंथन द क्लाइमेट फाइनेंस गवर्नेंस अगेन क्लाइमेट फाइनेंस हला एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट ग्लोबल फाइनेंस अथॉरिटी गोटे ग्लोबल फाइनेंस अथॉरिटी इंडिपेंडेंट हिसाब रे एस्टैब्लिश करबा दरकार विथ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी जोथरे कि प्रॉपर हमें क्लाइमेट ऊपर ही एलोकेट करि परिबा फंड्स एम्पावर रीजनल प्लेटफॉर्म्स हला साउथ साउथ क्लाइमेट कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करबा साउथ साउथ माने जति कि भी हमर साउथ एशियन कंट्रीज अछंती इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका सेमान को भीतर गोटे हमें डायलॉग क्रिएट करि परिबा जोथरे कि सेमाने तांगर एडाप्टेशन स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी को शेयर करि परिबे ओके and then integrate private sector leadership expand corporate accountability through mandatory climate disclosures and science based target frameworks है ना जो हमारा कौन कहलो प्राइवेट सेक्टर को भी हमें इथरे इंक्लूड निहाती करियार अछि एंड आउट पॉइंट मु तुमको कहि परिबी जो हमारे 5 ईयर टारगेट हमें रखुछु ना एनडीसी रे दिस इज अ पर्सनल सजेशन कि 5 ईयर जो टारगेट रखुछु 5 ईयर टारगेट को आउ टिके हमें बाइफरकेट करिबा एंड से भितरे प्रति 1 ईयर रो टारगेट टाको भी हमको टिके रीजनली मॉनिटर करिया को पड़िबो एंड ए सब जिंस करले निहाती हमें कॉप प्रोसेस टाको रिफॉर्म करिया विषय कथा कहिबे एंड दैट वुड वर्क एज ए वे फॉरवर्ड ओके सो कंक्लूजन हमें कोन लिखि परिबा द फेलियर टू मीट क्लाइमेट टारगेट्स is not the failure of COP. COP is not a failure, obviously. है ना? But of collective political will. Political टिके आसी जाउछि. The conference of parties remains humanity's most legitimate forum for negotiating its survival. A space where diplomacy, science and ethics intersect. ହେଲା तो ये जो कॉप हमें कहिछु एटा खाली गोटे यू नो जस्ट इट इज नॉट जस्ट ए बॉडी और एनीथिंग गोटे मीटिंग नुह बट जोथरे कि तमरो डिप्लोमेसी साइंस एथिक्स सब ये जिंस भितर इन्वॉल्व होछि तो किछि टारगेट जदि भी किछि कंट्रीज मीट करि पारनांती दैट इज नॉट द फेलियर ऑफ द कॉप एंटायरली ओके ताकू हमें केमते रिफॉर्म करि परिबा जोटा कि हमर अपकमिंग कॉप 30 हबार अछि हमकु रिफॉर्म विषय टिके कथा हबा को पड़िबा सो दैट आकु हमें आउट टिके स्ट्रेंथन केमते करि परिबा फाइनेंस को केमते हमें स्ट्रेंथन करि परिबा हैला so multilateralism though imperfect is the only compass guiding us toward a livable equitable and sustainable future हैला so what are the challenges of the cop 30 what are the way forward that we can think of in terms of cop or conference of parties ये सब जिनस आमे एठी लेखि पारे जदि सेमति किछि क्वेश्चन आछि ये सब जिनस आमे जदि मेंशन करि पारे एम आई क्लियर बुझी गला जिनस गुडाको एम आई क्लियर
ओके नेक्स्ट है इंडिया टू एक्सपांड ट्रेड एग्रीमेंट with four nation South American bloc. Okay. So India and the South American trade bloc. South American trade bloc. ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ existing PTA ଅଛି PTA କଣ preferential trade agreement ତାକୁ expand କେମିତି କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଏଠି meeting ହେଇଥିଲା. So here you can see Brazil ର vice president Geraldo Alckmin ଆଉ यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ଭିତରେ डिस्कशन ହେଇଥିଲା. ओके सो कौन ହେଇଥିଲା चलो देखिबा. So India and Brazil have announced a joint declaration to expand the India Mercosur MERCOSUR. Do you know which countries are under Mercosur? जदि जानिଛ कमेंट करो. So Mercosur और इंडिया रो जहाँ भी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अछि ताको केमते एक्सपांड करा जाय परिबो. एंड जदि हम सेटा करू इंडिया रो लैटिन अमेरिका सहित ट्रेड स्ट्रेंथन हबो एस्पेशली विद इन द मर्कसर ब्लॉक ऑफ ब्राजिल अर्जेंटीना उरुग्वे एंड पाराग्वे. ओके तो जेतोळे मो मर्कसर कहूची मर्कसर ब्लॉक कहूची then you should understand that I am talking about Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay. सबु मिसेले हमरो एटा Mercosur ही जाउची. So here you can see Mercosur जदि हम entirely कहिबा this is the Mercosur I am talking about. Okay, so it is a regional trading bloc in Latin America initially established by the Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay and subsequently ताको किए जॉइन करिसंती वेनेजुएला आ बोलिविया ताको परे जॉइन कले. तो जेतबेले स्टार्टिंग हैला तो अर्जेंटीना ब्राजिल पाराग्वे उरुग्वे थिले एंड नेक्स्ट तमरो वेनेजुएला बोलिविया ऐड हेचन. Okay, Mercosur. So it was established in 1991 under the Treaty of Ascension with the goal of promoting free movement of goods, services, capital and people among the member states. Okay. The Treaty of Ouro Preto gave Mercosur a trade or legal identity and established it as a customs union allowing common external tariffs and coordinated trade policies. तो ଯେତିକି ବି country ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି proper movement of goods, services ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଆର focus ରହୁଛି. And it is the fourth largest integrated market. यूरोपियन यूनियन विषय तमाने बहुत फेमस सुनिथिबो हैला. एशियन विषय तमे सुनिଛ एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट नेशंस. आ गोटे अछि तमरा नाफ्ता व्हिच इज द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो ए सब परे तमरा आसे मर्कसर व्हिच इज ए fourth largest integrated market after the European Union, NAFTA or Asia. Mercosur countries form the world's sixth largest economy with a total population of 270 million people. Okay, तो Mercosur सहित इंडिया रा गोटे डिक्लेरेशन साइन ହେଇଛି joint declaration. So what are the key highlights of this declaration? So both the nations माने इंडिया और ब्राजिल ସେମାନେ एग्री करछंती कि जो preferential trade agreement अछि that will be significantly broadened to include both tariff and non-tariff issue. ଯେତିକି ବି tariff related issue ଅଛି और non-tariff related issue ଅଛି दिरे जाक include हबो allowing more trade to benefit from the preferential access. A technical dialogue will soon begin led by the Joint Administration Committee established under the Article 23 of the Preferential Trade Agreement. This will define the scope and modalities of the expanded deal. The move aims to broaden tariff preferences and scale up bilateral trade between India and Brazil from existing 12.2 billion to 20 billion by 2030. Already तमे जन जानी थी ब्रिक्स समिट जो हेथिला ब्रिक्स समिट हेथिला 17th ब्रिक्स समिट हमर हेथिला जायथिले प्रधानमंत्री मोदी. तो सेतेबेले भी हमर गोटे कहवा हेथिला कि इंडिया और ब्राजिल रो ट्रेड ऊपर हमें फोकस करिबा बाय 2030 हमर ट्रेड पूरा हाई क्लास हबार अछि इंडिया और ब्राजिल भितरे.
ହେଲା ତ ତାକୁ फोकस କରିକି वर्तमान डील टा भी ହେଇଛି जोथरे ଆମେ टार्गेट रखिछु कि इंडिया ଆଉ ब्राजिल रो ଆମେ जो ट्रेड रहिछि ताको ଆମେ अप टू 20 बिलियन पर्यंत नबा 20 बिलियन यूएसडी पर्यंत नबा बाय 2030. Okay, so India Mercosur preferential trade agreement is India signed a framework agreement in 2003. जदि आम हिस्ट्री कथा देखिबा 2003 रे इंडिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करथिला हैला एंड 2004 रे पीटीए साइन करथिला व्हिच इज द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 2004 रे ऑलरेडी साइन करथिला जोथरे कि तमरो ट्रेड रिलेटेड डिस्कशन सब हुए हैला एंड आपको 2009 रे ताको इंप्लीमेंट करा गला 2004 रे साइन करथिले 2009 रे इंप्लीमेंट करा गला इन अकॉर्डेंस विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो मर्कसर जब तुम्हें जाने ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हें जाना बिकॉज इट न्यूज अछि ओके सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि सब जति भी तुम्हें कंट्रीज देखो छ एठी दिस आर ऑल पार्ट ऑफ योर मर्कसर ओके सो ये जो इंडिया मर्कसर रो एग्रीमेंट हला तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इंडिया पे ताको कोन एटा बेनिफिशियल हे परिबो एज आई सेड इंडिया ब्राजिल रो ट्रेड तो बढ़िबो कोन माने जेमती मु तुमको कहली ब्रिक्स हला G20 हला IBS हला ए सबुरे इंडिया और ब्राजिल गोटे कॉमन मेंबर्स अछन हला एंड सब बळे से माने फोकस करंती केमती तांगर ट्रेड जिनसटा को हमें बढ़ाई परिबा एनहांस करि परिबा तो एटा साउथ साउथ कोऑपरेशन टा को रिइंफोर्स करिवो India's engagement with the PTAs in emerging Latin American economies is advancing its multipolar foreign trade strategy. Enhanced market access माने आउ टिके अधिक मार्केट एक्सेस इंडिया को भी मिल जिवो ब्राजिल को भी मिले जदि टैरिफ कंसेशन जितबेला हमें यूएस रो टैरिफ कथा एबे कहूची यूएस एते टैरिफ लगोची तो हमको अल्टरनेटिव वेस भाबिए को पड़िबो हम अन्य कंट्रीज सहित हम ट्रेड टा को डेवलप करिबा हमें कोन पे यूएस ऊपर एते हेवीली डिपेंडेंट रहबा बुझि पालो सो हमें ब्राजिल सहित वर्तमान ए सब जिंस करूची हैला तो टैरिफ कंसेशंस भी रहूची इंडिया प्रोडक्ट्स को मोर कॉम्पिटिटिव बनेबो लैटिन अमेरिका रे तो चाइनीज आ यूरोपियन सप्लाई ऊपर हमर जो डिपेंडेंस रहूची सेटा कमी जिवो हैला जदि हमें ब्राजिल सहित लैटिन अमेरिका सहित टाई अप करूछु तो एंड जदि हमें देखिबा फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 रे इंडिया एक्सपोर्ट्स टू द मर्कसर were 8.12 billion USD with imports at 9.36 बिलियन USD हैला तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाखा पाखी हमें कहि परिबा खास करके ब्राजिल सहित हमर जिते भी मर्कसर कंट्रीज अछंती खास करके से भितर ब्राजिल सहित हमर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशियो टा नॉर्मल अछि हैला जेति कि हम इंपोर्ट करूछु सेति कि हम एक्सपोर्ट करूछु कि कहा ऊपर हेवीली डिपेंडेंट अछि सेमति हमें कहि परिबानी strategic trade outreach deepening ties with Mercosur complements India's push for free trade agreements with the European Union, the United States, and the Indo-Pacific partners, diversifying its trade portfolio. ହେଲା तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विषय ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ ୟୁରୋପିଆନ ନେସନ ସହିତ ହଉ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ସହିତ ହଉ କି ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ ସହିତ ହଉ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ ପାର୍ଟନର ସହିତ ହଉ तो ये सब जिनस जदि आम मर्कसर सहित आम टाइटा को डिपेंड करुचु तो इंडिया एमान ऊपर फोकस निहाती पकेबो यूएस ऊपर प्रेशर टिके पड़िबो बुझिपल यूएस तो जळी पोड़ी केना पाउंस हो जाए ना आम जदि किछि आउ अन्य कंट्री सहित किछि करि दो तो निहाती टा इफेक्ट पकेबो तांको ऊपर हैला एग्रीकल्चर एंड एनर्जी अपॉर्चुनिटीज इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स हैला हमको एग्रीकल्चर इंपोर्ट हमको दरकार एनर्जी रिसोर्सेस हमको दरकार नेक्स्ट किछिटा वर्ष पे जेतବେଳେ ଆମେ विकसित भारत कथा कहूछु ए सब जिंस हमको दरकार बाहर कंट्री सेमती भी नुह कि हम सब जिंस रे आत्मनिर्भर हबा ए सब जिंस तो बाहर हमको दरकार हम हेलो तो ए सब पई हमको एमतिया किछि ट्रेड एग्रीमेंट्स करिया को पडुछि अन्य कंट्रीज माने को सहित एक्सपोर्ट रे तो हम अछु फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग गुड्स एंड आईटी सर्विसेज ए सब हम एक्सपोर्ट करूछु तो एटा भी हमर इंप्रूव हबो हैला जदि अन्य देश सहित तमरा टाइस इंप्रूव होउछि तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ए सब जिंस they निहाती improve hub. Clear? What are the challenges in expanding the India Mercosur preferential trade agreement?
तो बेनिफिट्स आम कथा हलु कि जदि इंडिया और मर्कसर एग्रीमेंट किसी होची ट्रेड रिलेटेड कौन कौन बेनिफिट्स हमको हबो बट कौन कौन चैलेंजेस रोज जदि आम एक्सपांड करूँ प्रथम है एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शन मर्कसर कंट्रीज जो माने अछंती खास करके ब्राजिल और अर्जेंटीना सेमानकर ना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अच्छी फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर है तो सेमाने इंडिया जदि भी चाहिए सेमानकठू सुगर पल्सेस और डेयरी नबा पई एते एक्सेस न दे पारंती सेमान बिकॉज सेमाने एगुडा को प्रोटेक्टिव जोन में तंगर रखुछन हैला डायरी हो सुगर हो पल्सेस हो तो इंडिया रो एक्सेस सेठी कमी जाई पारे ए सब क्षेत्र रे दैट इज द चैलेंज इकोनॉमी asymmetry मकसर economies are heavily commodity export oriented है commodity services गुड़कर export oriented ऊपर से डिपेंड करते आ इंडिया रो हमर कोन हमर मेन हला मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हम जानि सो दिस एसिमेट्री माने ये गोटे जिंस ऊपर फोकस करूची आ ये आउटे जिंस ऊपर फोकस करिचो ए जो एसिमेट्री रही जाउची एटा टिके प्रॉब्लम हेई पारे रेसिप्रोकल कंसेशंस ऊपर एग्री करिया पे तो एटा टिके असुविधा हेई पारे consensus among member states ହେଲା unlike the bilateral FTAs माने जति भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अछि तांको छडा जति भी मर्कसर कंट्रीज अछंती से माने हम प्रोडक्ट लिस्ट टैरिफ लाइंस ए सब को अप्रूव करिबा दरकार हैला तो डिपेंड करे कि से माने केमिति माने मर्कसर कंट्रीज गुडा अछंती से माने केमिति आको नौचन ओके ब्राजील खाली राज्य हेले तो हबनी बाकी सब मर्कसर कंट्रीज राज्य हबार अछि infrastructure and logistic constraints. Even with tariff concessions, trade flows can be limited by transportation, shipping, and supply chain inefficiencies between India and South America. तो जितने की भी अबे ग्लोबल टेंशन चली तो इंडिया हमर एठी रहला साउथ अमेरिका एठी रहला हला कोची तो एठी हमरो तो अबे तमरो प्रॉब्लम चली हैला वार वगैरह ये सब चली जियोपॉलिटिकल टेंशन चली तो सेही कंडीशन रे ଆମର ट्रेड फ्लोटा टिके असुविधा हेई परिबो शिपिंग रा प्रॉब्लम हम देखिया को पाई परिबो ट्रांसपोर्टेशन रे प्रॉब्लम देखिया को पाई परिबो सप्लाई चेन रे भी इनएफिशिएंसीज देखिया को पाई पारु बुझि परलो दिस आर द challenges non tariff barriers differences in standards technical regulations and customs procedures can restrict trade even if tariff concessions are granted harmonizing NTBs is often more challenging देन एनटीपीस माने बुझी परछ नॉन टैरिफ बैरियर्स को हार्मोनाइज करबा एटा बहुत चैलेंजिंग देन द टैरिफ नेगोशिएशंस टैरिफ नेगोशिएशन इजीली कर परियो बट जो गुडा टैरिफ पडुनी सेथरे नेगोशिएशन करबा टिके डिफिकल्ट माने डिफिकल्ट हेचे सो दिस आर द चैलेंजेस जे कोनो से भी टॉपिक हमें कहूछु सेथरे हमरो चैलेंजेस कोन रहइबो बेनिफिट्स कोन रहइबो वे फॉरवर्ड कोन रहइबो ए सब जिंस हम रखे पड़िबो हैला what measures can strengthen India Mercosur PTA माने हमें केमिति को आउटके स्ट्रेंथन करि परिबा सो बाय डीपनिंग द प्रोडक्ट कवरेज तो ये जे हमें प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अछि ताको हमें एक्सपैंड करिया को पड़िबो जहां पे टैरिफ नॉन टैरिफ अछि ताटू बहुत एक्सपैंड करिया को पड़िबो एंड प्रायोरिटाइज म्यूचुअली बेनिफिशियल सेक्टर हैला माने एमितिया सेक्टर चूज करे को पड़ियो जोथरे कि ब्राजील और मर्कसर एमान को भी बेनिफिट हबो हमको भी बेनिफिट हबो तो एग्रीकल्चर रिलेटेड रे हमर एते बेनिफिट हबो नै दे जनकर किंतु आईटी सेक्टर रे क्लीन एनर्जी सेक्टर रे ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर रे ए क्षेत्र रे मर्कसर रो भी फायदा हबो इंडिया रो भी फायदा हबो हैला मर्कसर इज नॉट ए सिंगल कंट्री मर्कसर इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज को गुडा को माने ट्रेड ब्लॉक एटा फॉर्म करूची ऑलरेडी मु तुमको कहली मन रखिबो से जिंसरा addressing the non-tariff barriers. Hello. Align standards, technical regulations, and sanitary measures with the World Trade Organization norms. Streamline the custom procedure. केमती तमे shipping करिबा ट्रांसपोर्टेशन करिबा टिके तार प्रोसीजर टाको पूरा स्ट्रेट एंड क्लियर रखा को पड़िबो and strengthen digital trade facilitation to boost ease of doing business. हैला टिके ए सब जिंस ऊपर फोकस करेगा पड़िबो सो दैट हमर इज ऑफ डूइंग बिजनेस रा बूस्ट हो एग्रीकल्चरल नेगोशिएशंस एंड मार्केट एक्सेस जेमते मु तुमको कहली एग्रीकल्चर क्षेत्र रे एते माने सुविधा तो हबन असुविधा हे पारे हैला बिकॉज़ ऑफ द possessiveness of Brazil towards their agriculture production so secure phased access for pulses rices and processed food while respecting Mercosur sensitivities मु कहली ना
ମର୍କସର ର ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଜୋନ୍ ରହୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର। ତ ବେଶୀ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳିକି ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଆମେ ଏକ୍ସେସ୍ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବା, ସିକ୍ୟୁର କରିପାରିବା ହେଲା। ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ ଉପରେ, ଆମେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାନି ସେ ଭିତରେ। ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କୋପରେସନ ଇନ୍ ଏଗ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଲଗା, ଏଗ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଲଗା। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛୁ, ବିକଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି ଆଗରେ, ରାଇଟ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ମର୍କସର କେମିତି ଆମେ ଏଗ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏଗ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା, ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା, ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା। strategic alignment with South South cooperation, इंडिया और ब्राजिल रो जो टाई हला हला। तो ब्रिक्स तुमको कहली ब्रिक्स रे हमरो इंडिया गोटे मेंबर, ब्राजिल गोटे मेंबर, आ तुमरो इप्सा जोटा इंडिया ब्राजिल साउथ अफ्रीका, ए सब जिंस रे इंडिया ब्राजिल रो टाई जदी इंप्रूव हुए हला, तो हमर बाकी सब पॉलिसी सपोर्ट भी रहिबो, कोऑर्डिनेटेड हेके रहिबो, एंड अन्य क्षेत्र रे भी हमरो इन्वेस्टमेंट लिंकेजेस रहिबो हला। इज तो these are all the measures that can strengthen this preferential trade agreements. So conclusion रे हमें कौन लिखी परिबा? The expansion of the India-Mercosur preferential trade agreement offers a strategic opportunity to deepen the trade, diversify the markets, and strengthen the South-South cooperation. Okay, तो जितने South countries जितने की भी अछंती, South countries in the sense हमें इटा Mercosur से तो एक कथा हुई, तो Mercosur is also South American ना, तो एटा हमरो इंडिया भी रहिला साउथ रे। तो ये सब दीटा कंट्री हमरो साउथ रहिला, तो साउथ टू साउथ कोऑपरेशन तो स्ट्रेंथन हबो ही हबो। आ नॉन टैरिफ बैरियर्स को एड्रेस करबा, तांकर एग्रीकल्चरल सेंसिटिविटीज को रेस्पेक्ट करबा, ये सब करले एटा गोटे निहाती सक्सेस हे परिबो एग्रीमेंट ता कहि परिबो। ओके, किछि इलॉजिकल जिंस हम डिस्कशन करलु कि तुमको टिके अलगा लागि पारे, बिकॉज़ हम जनरली जिंस गुडा डिस्कस करू ना, बट मेन्स पर्सपेक्टिव रे हमको टिके इंटरनेशनल रिलेशंस ऊपर फोकस करिया को पड़िबो हला। डायरेक्टली जदिबा ए जिंसटा नाही हमर सिलेबस रे, बट वी हैव टू कोट दिस इन आवर आंसर्स। ओके, से जेतु मेन्स दोथबे बहुत पहिला, सेति पे मु टिके रखुचे इंटरनेशनल रिलेशंस जो गुडा को न्यूज रे अछि तो। ओके, सो नाउ कैन यू आंसर मी? मर्कसर जोटा कि हमें न्यूज रे देखु इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, कहि परिबो कोन आंसर हबो? कमेंट रे कहला। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नॉर्थ अमेरिका ना साउथ अमेरिका ना एशिया ना यूरोप? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कम ऑन, आंसर दियो। नॉर्थ अमेरिका ना साउथ अमेरिका ना एशिया ना यूरोप? आंसर कौन हबो? Obviously we know answer हबो B, right, which is साउथ अमेरिका। मैं तुमको कहली साउथ साउथ कोऑपरेशन बारंबार कहूची ना, साउथ साउथ कोऑपरेशन ब्राजिल हला। बाकी सब कंट्रीज न मन रखि परले भी ब्राजिल तो मन रखि परिबो। तमे साउथ अमेरिका और इंडिया रो टाइप विषय कथा होतलो एटा, बुझ परलो? तो मर्कसर टा हमर साउथ अमेरिका नामे कहि परिबो। सो इट इज अ फुल कस्टम्स यूनियन एंड ए ट्रेडिंग ब्लॉक
जो कि अर्जेंटीना, ब्राजिल, पाराग्वे, यूरुग्वे एमाने सब अछंती, इवन वेनेजुएला भी अछि एंड ए सब अछि किंतु माने परे जॉइन करथिले किंतु मन रखिबो वेनेजुएला को सस्पेंड करा गला 2016 रे हला एंड यूरोप नुह सुजिता आमे एटा साउथ साउथ कोऑपरेशन विषय रे कथा होथिले ना हला जदी माने मु तो एठी शो करि परिबिनी तुमको वर्ल्ड मैप टा को इमेजिन करो ब्राजिल टा कोठी रहउची तमरो साउथ अमेरिका रे राइट यूरोप तो रहिगला ऊपर रे बुझपलो अमेटा मार्कस टा साउथ आडे रहिला साउथ अमेरिका खास करके सो वेनेजुएला मेंबर तो थिला परे जॉइन हेई थिला बट 2016 रे ताको सस्पेंड करा गला एंड बोलिविया चिली पेरू कोलंबिया इक्वेडर गुआना सुरीनेम ए सबु तार एसोसिएटेड मेंबर्स भी अछंती हैला ऑब्जर्वर कंट्रीज के न्यूजीलैंड एंड मेक्सिको ए माने सब ऑब्जर्वर कंट्रीज तार मेन पर्पस कोन टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड फ्लूइड मूवमेंट ऑफ goods people and currency okay to promote free trade and fluid movement of goods people and currency. India and the Mercosur bloc have stepped up efforts to expand their preferential trade agreement to make greater inroads into the others market. Okay, sure. India to host the 2030 Commonwealth Games. Hello, जानिछो कि नहीं 2030 रे Commonwealth Games India will be hosting it and खास करके कोठी दिल्ली रे ना कोठी अहमदाबाद रे हेलो सो अहमदाबाद सिलेक्ट करा जाइछि कि एठी हमर हबो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 रे ओके सो नाइजेरिया रो अबुजा को बीट करके अहमदाबाद इज रिकमेंडेड एज द होस्ट फॉर द 2030 Commonwealth Games. Ahmedabad is in Gujarat, obviously. Okay. Sure. So, India is set to host the centenary edition of the Commonwealth Games in 2030 with Ahmedabad chosen as the proposed venue, marking a key step in its bid for 2036 Olympics. India hosted the Commonwealth Games in 2010. 2010 रे दिल्ली रे କରିଥିଲା इंडिया होस्ट ହେଲା तो this is not the first time India host କରୁଛି 2010 ରେ India host କରିଥିଲା and it has a strong Commonwealth Games record finishing fourth at Birmingham in 2022. So 2026 Commonwealth Games हबार अछि ग्लासगो स्कॉटलैंड हैला तो मन रखिबो 2026 रे ग्लासगो स्कॉटलैंड रे हबार अछि हैला एंड 2030 रे इंडिया रे हबो अहमदाबाद हैला एटा मन रखिबो बिकॉज कोन पे स्पोर्ट्स रिलेटेड इंडिया फोकस करूची हैला स्पोर्ट्स ऊपर इंडिया बहुत फोकस करूची स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी आसिला प्रीलिम्स रे तो आमे स्पोर्ट्स रो किछि न्यूज़ गुडा को इग्नोर करिया कथा नो खास करके कॉमनवेल्थ गेम्स आ ओलंपिक्स रिलेटेड टू टोटली नो ओके सो कॉमनवेल्थ गेम्स हमर सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट ओलंपिक तो सबटु बड़ ओलंपिक परे जो सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होछु कॉमनवेल्थ गेम्स हैला तो जो थरे कि तमरा 71 नेशंस एंड यूनियन टेरिटरीज रो एथलेट्स माने पार्टिसिपेट करंती एंड सेलिब्रेट्स द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ द कॉमनवेल्थ माने बुझ परछो कॉमनवेल्थ तार ना कोन पे दिया गला कॉमनवेल्थ ना कोन पे दिया गला बिकॉज़ कॉमनवेल्थ होची गोटे वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 56 इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीज हैला कॉमनवेल्थ अंडर रे एतिकी कंट्रीज आसंती तमरा हैला एंड से माने ही पार्टिसिपेट करंती तमरा कॉमनवेल्थ गेम्स रे ओके सो इवोल्यूशन कथा जदि हमें देखिबा 1930 रे हेइतिला तो सेंटेनरी एडिशन हमरो इंडिया रे हबार अछि सेंटेनरी माने कोन बुझ परछो 100 वर्ष परे 1930 हैला 1930 रे अगेन नेक्स्ट तमर हैला 2030 तो केते वर्ष हो गेला ऑलमोस्ट 100 एडिशन ते तारो इंडिया रे हबा को जाउ 99th एडिशन ते कोटी हबो कोटी हबो 99th एडिशन ते कोटी हबो कहलो
99 अच्छा मते कहि परिबो अच्छा एटी मु लिखिछ एटी देखो प्रति 4 वर्ष रे कॉमनवेल्थ हुए हला तो एबे 2026 रे हबार अछि तापर 2030 रे हब तो 2026 रे जो हबार अछि माने 2030 रे जो हबार अछि that will be the 100-year centenary edition हला and that will be the 24th edition आमे कहि पारि माने 24th जेति प्रति वर्ष तो होन ना प्रति वर्ष हेतिले हमर हेथांदा 100 वर्ष माने 100 नंबर आमे कहि पारथा तो बट प्रति वर्ष होनी 4 वर्ष को थरे हुए हला तो 2030 रे जो इंडिया रे हबो that will be the 24th number edition हला 24th commonwealth games so 23rd जोटा हमर होची that is in Glasgow Scotland बुझिपला 24th टा हमर हबो इंडिया रे 99 ता हम कहि परिबानी बिकॉज़ प्रति वर्ष तो होनी ना 4 वर्ष को थरे होची अच्छा सो फर्स्ट कोडी स्टार्ट हेतला एटा 1930 रे कनाडा रे प्रथम थर पय एटा खेला जायतिला as the British Empire Games सेतबेले ता ना कोन थिला British Empire Games governing body किए Commonwealth Games Federation is responsible for the direction and control of the games purpose and values it is held once every 4 years and is often referred to as the friendly games reflecting the core values of humanity equality and destiny it promotes sports education recreation while celebrating the Commonwealth's cultural and linguistic diversity तो जति भी Commonwealth nations अछंती से माने पार्टिसिपेट करंती से मान करो हमें जिंस गुडा को केमिति इंप्रूव कर करी है ना चलो यस हैमिल्टन रे फर्स्ट टाइम हेतिला एटा कनाडा रे ओके तो 1926 रे अच्छा 1930 रे हैमिल्टन हेतिला 1926 रे यूके एंड डोमिनियंस से माने एग्री करथिले टू बी इक्वल मेंबर्स विद इन द ब्रिटिश एम्पायर owing allegiance to the monarch but retaining autonomy 1949 रे they established the modern commonwealth of nations allowing republics and the non british monarchy भी एथरे join करि परिबे हला important तो नुह but जानि थो membership जदि हम कहबा as I said it is composed of 56 independent countries commonwealth कथा जदि हम कहबा 56 countries एथरे अछंती and most formerly तमरो british colonies गुडाको membership is voluntary है सेमते किछि बाध्यता मूलक नो it is voluntary open to all and open to all the commonwealth nations obviously and any country can join Gabon and Gabon and Togo से माने 2022 रे जॉइन करछन्ते commonwealth हला एटा मन रखथिबो Gabon and Togo ए दीटा कंट्री 2022 रे जॉइन करछन्ते ओके and the values and governance it is guided by Commonwealth Charter promoting development democracy and peace with the Commonwealth Secretariat in London India and Commonwealth relation जदि हमें देखिबा India is the largest Commonwealth member by population हिसाब रे जदि हमें देखिबा जेतिकी भी Commonwealth nations अछंती population wise India सबुठु बड़ हला and the fourth largest financial contribution हिसाब रे financial contribution हिसाब रे India fourth largest member होची Commonwealth रो but population हिसाब रे India सबुठु टॉप रे होची Commonwealth nations member भितरे it has hosted the Commonwealth Summit 1983 रे India हमर Commonwealth Summit host करथिला आउ 2010 रे Commonwealth Games host करथिला ए years गुडा को टिके मन रखिला क्लियर 2010 रे न्यू दिल्ली रे हितला 2030 रे वर्तमान हमर अहमदाबाद रे हबार अछि Commonwealth Games क्लियर नेक्स्ट गोटे टॉपिक अगेन आसिला हमर रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल मिशन विषय हमें पढ़िथिलु हां कि नहीं क्रिटिकल मिनरल मिशन विषय हमें पढ़िथिलु तो एटा गोटे वर्तमान रेयर अर्थ को नै कि टिके जियो पॉलिटिक्स चली छि सब आडे हैला इंडिया पय तो इम्पोर्टेंट इंडिया पय हमर प्रधानमंत्री मोदी कोन कहै छनि त माने सुनिथिबो इंडिपेंडेंस डे रे बट जियो पॉलिटिकल इश्यू वर्तमान होची बहुत रीजंस तार अछि चाइना इन्वॉल्व अछि यूएस इन्वॉल्व अछि ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व अछि कोन पय and what is the reason for this geopolitics of the rare earth elements टिके हमें बुझिबा
सो देख प्रथम कथा हल्दा जो आम रेयर अर्थ कहूँ आ क्रिटिकल मिनरल्स कहूँ दी जण सेम ना बुझ एटा जिनसटा है क्रिटिकल मिनरल्स को तुम रेयर अर्थ सहित सिमिलर करबनी ऑल रेयर अर्थ आर नॉट क्रिटिकल मिनरल्स और ऑल क्रिटिकल मिनरल्स आर नॉट रेयर अर्थ आ तार जो नाटा भी दिखाई ना रेयर रेयर माने एमती नुह कि तुम पाइबनी से मिनरल्स मान easily they are available. I mean, they are able abundant minerals. Rare earth the not a rare, but ସେମାନେ abundantly available ଅଛନ୍ତି. But ତାଙ୍କର extraction process ଟା ବହୁତ costly. ହେଲା ତ ବାହାରୁ ଜିନିଷଟା ମିଳିଯିବ ତମକୁ no doubt, but ଭିତରୁ ଯୋଉ main material ଟା extract କରିବାଟା ଟିକେ costly. ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ rare earth minerals ଆମେ କହୁ. Otherwise ଏମିତି ନୁହଁ କି ସେଟା ମିଳିବାଟା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ. Now ଟିକେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଏଠି I hope এটা ତମକୁ clear ଅଛି କି ନାହିଁ I'm not sure. Okay, let me try. Can I zoom it? Just a second. So no, I cannot zoom it. But ମୁଁ ତମର ଏଠି ଲେଖି ବି ଦଉଛି ଚलो ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏଟା important ଅଛି ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ world ଟା ଦେଖିବା ଏଠି ତମ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ ଟା ଏଠି ଦେଇଛି world reserves of rare earth ହେଲା ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାହା ପାଖରେ କେତେ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ତମର rare earth reserve ରହୁଛି ଚାଇନା ପାଖରେ ହେଲା ପାଖାପାଖି ତମେ ତାର ନମ୍ବର୍ସ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାଖାପାଖି ତ ସେଟା ଅଛି 4400000 ମାନେ କେତେଟା ଜିରୋ ହେଲା 3 4 5 6ଟା ଜିରୋ ହେଲା ତ କେତେ ଏଟା ଆମେ କହିବା କେତେ କହିବା ଏଟା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଥ ରେ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛ ଏଟା ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି କେତେ ନମ୍ବର ହବ କେତେ ହବ 44 ମିଲିୟନ ହେଲା 44 ମିଲିୟନ So 44 million reserves କାହା ପାଖରେ ଅଛି rare earth ର ଚାଇନା ପାଖରେ ରହିଛି ହେଲା ତାପରେ ତମର ଆସେ ଭିଏତନାମ ତାପରେ ତମର ଆସେ ବ୍ରାଜିଲ then you have India and ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଲା ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଖରେ ବି ଭଲ ରିଜର୍ଭସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ 42 ଲାख ରିଜର୍ଭସ୍ ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି 69 ଲାख ହେଲା ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରିଜର୍ଭସ୍ ରେୟାର ଅର୍ଥର କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଚାଇନା ପାଖରେ ତ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ନିହାତି ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କରୁଥିବ ନିହାତି ହେଲା ତ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଯୋଉ ଆମେରିକା ତ ଟାରିଫ ପକଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚାଇନା ଉପରେ ବି ସେ ଟାରିଫ ପକେଇ ଦେଇଛି ହେଲା 125% ଟାରିଫ ଲଗେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଉପରେ ସେ ଟାରିଫ ଲଗେଇଛି ଚାଇନା କଣ କରୁଛି कि ସେ ଜାଣିଛି ଆମେରିକା ତାର ରେୟାର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି ରେୟାର ଅର୍ଥ ଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ହେଲା ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁ ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ସେକ୍ଟରରେ ରେୟାର ଅର୍ଥ ୟୁଜ ହୁଏ ତମର ଡେ ଟୁ ଡେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଡିଭାଇସ ମୋବାଇଲ ବଗେରା ସବୁ ଜିନିଷରେ ରେୟାର ଅର୍ଥ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡାକ ୟୁଜ ହୁଏ ତ ଆମେରିକା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି ୟୁଏସଏ ସବୁଠୁ ୟୁଏସଏ ପାଖରେ ଅଛି ତମର 23 ଲାख ର ଡିପୋଜିଟ ରହିଛି ମାନେ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି ହେଲା and ଚାଇନା ପାଖରେ ଦେଖିଲ 44 ମିଲିୟନ ତ ଆମେରିକା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହାଇଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନା ଉପରେ ଫର ରେୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା and ସେଇ କେସରେ ସେ ଯଦି ଚାଇନା ଉପରେ ଏତେ ଟାରିଫ ଲଗାଉଛି ଯୋଉ ଚାଇନା ତାର ମନୋପଲି ଅଛି ରେୟାର ଅର୍ଥ ଉପରେ ସେ ତାକୁ ଟିକେ ମିସୟୁଟିଲାଇଜ ନିହାତି କରିବ ତ ଚାଇନା ବହୁତ ସାରା କର୍ଭ ତାର ଲଗେଇ ଦେଇଛି କି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଲଗାଅ ତମର ଟାରିଫ ବଟ ଆମେ ଆମର ରେୟାର ଅର୍ଥକୁ ଏମିତି କରିଦଉଛୁ ତମେ ତାକୁ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ କରୁନି ସେ ୟୁଏସଏ ହେଲା ତ ଏବେ କଣ କରିଛି ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଟାଇ ଅପ୍ କରିଦେଇଛି ରେୟାର ଅର୍ଥ ପାଇଁ ହେଲା ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଏଣ୍ଟାयर ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତ ରିସେଣ୍ଟଲି
ऑस्ट्रेलिया सहित गोटे मीटिंग हेतिला ऑस्ट्रेलिया सहित अमेरिका तार टाई अप करिछि रिगार्डिंग द रेयर अर्थ हला बट स्टिल एंटायर वर्ल्ड रे जदि हमें देखिबा चाइना रो मोनोपोली रहिछि रेयर अर्थ ऊपर सो व्हाट आर दिस रेयर अर्थ बाय द वे रेयर अर्थ प्रथम तो न्यूज हमें देखिबा चाइना's new export curves on 12 rare earth elements have reignited trade tensions with the US. The US responded by imposing 100% tariff on Chinese exports effective November 1, 2025. तो खाली रेयर अर्थ ऊपर नुह रेयर अर्थ छड़ा बहुत सारा जिनस ऊपर यूएस इज डिपेंडेंट ऑन चाइना है ना प्रति जिनस रे यूएस इज डिपेंडेंट ऑन चाइना सो इन दैट केस से कौन करछि से टैरिफ लगाउछि ये तारो नुआ कर सब लगाउछि तारो रेयर अर्थ एलिमेंट ऊपर चाइना ओके सो रेयर अर्थ एलिमेंट कोन दिस आर ए ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स हैला तो एठी तमे जत्ति कि भी एठी ग्रीन्स एगुडा को देखुछो ये सब होला तमरो रेयर अर्थ हम को 17 टा केमिकल एलिमेंट जो भितरु तमरो 15 टा लैंथोनाइड एलिमेंट्स हैला तो ये जो तळ लाइन रे 6 नंबर लाइन हम एठी जत्ति कि भी देखुछु पीरियडिक टेबल रो ये सब तमरो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैला स्कैंडियम यूट्रियम ये सब रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे आर रिलेटिवली अबंडेंट इन अर्थ कस कहली रेयर माने नुह कि हमें ताको पाई परिबानी they are relatively माने abundant but सेमान को मैं rare कौन पे कहूँ because they are found in low concentrations and सेमाने अलगा minerals होय तो बहुत mix है कि थान तो ताको extract करिवा टा difficult है जाए एरो expensive है जाए so सेति पे हमें ताको rare कहूँ otherwise मिली जाए सेटा okay rare earth elements are used to make magnets for electric vehicles wind turbines weapons etc तो बुझ परछो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स रे यूज होची विंड टर्बाइन्स रे दरकार पडुची वेपन्स रे दरकार पडुची मेडिकल डिवाइसेस रे दरकार पडुची हला तो ऑब्वियसली ए सब जिंस रे दरकार पडुची आ चाइना पाखरे यार मोनोपोली अछि तो बुझी पड़थलो कोन सिचुएशन होची रेयर अर्थ आर डिवाइडेड इनटू हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट आउ लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हला हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स आउ लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स दी प्रकार रेयर अर्थ एलिमेंट अछि So, ये जो light rare earth elements है बहुत abundantly मिल जाए और heavy rare earth elements are more critical because of their high demand and low availability है ना so low rare earth element भितरे neodymium एटा होची सबुठु critical है ना जोटा कि तमरो मोबाइल फोन रे यूज हुए मेडिकल इक्विपमेंट रे यूज हुए और इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज हुए कोटा neodymium बुझ पाले ଆଉ ହାଇ ହେଭି ରେयर अर्थ एलिमेंट ଯେମିତି କି ତମର डिस्प्रोजियम यट्रियम पेरियम एगुड़ाक क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज रे यूज हुए हैला बट जेहेतु तांकर सप्लाई लिमिटेड तांकर मार्केट भी बहुत छोट ओके सो मिसलीडिंग नेम कोन पे कहला बिकॉज़ एज आई सेड रेयर माने नुह कि दे आर रेयरली फाउंड दे आर माने लेस कंसंट्रेटेड एंड से माने मिसी की थांदी तांको एक्सट्रैक्शन करवाटा डिफिकल्ट हे जाय तेति पे तांको रेयर कुआ जाय सो इलेक्ट्रॉनिक्स रे यूज हुए क्लीन एनर्जी सेक्टर रे यूज होची डिफेंस सेक्टर रे यूज होची मेडिकल टेक्नोलॉजी रे यूज होची इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रे यूज होची सब क्षेत्र रे हला हमरो जो एमआरआई स्कैनर तमे देखो पीटी स्कैनर रह गला जति की भी रेडिएशन बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट डिवाइसेस हे गला टूल्स हे गला ए सब जगह रे डिफेंस सेक्टर रे तमरो मिसाइल रे रडार सिस्टम रे सब जगह रे रेयर अर्थ यूज होची हला दैट मींस सब कंट्रीज को रेयर अर्थ तो दरकार एंड से केस रे तमरो चाइना पाखरे मोनोपोली अछि जाकु से मिसयूटिलाइज करि पारिबो ओके दैट इज द एंटायर आर्टिकल इज ऑल अबाउट बुझबो जो आर्टिकल टा बाहर छि द न्यू पावर ऑफ रेयर अर्थ हैला सो नाउ बीजिंग इज यूजिंग देम एज अ स्ट्रेटेजिक लीवर इन इट्स ट्रेड वॉर विद द यूएस सहित तार जो ट्रेड वॉर चली छि ता सहित ता पे एटा से बहुत बढ़िया से यूज करू छि ए मोनोपोली टा बुझबो तो इंडिया रो करंट पोजीशन कोन म तुम कहली इंडिया पाखरे केते रिजर्व रही छि ए तुम टेबल रे देखिथिबो ऑलरेडी इंडिया पाखरे रही छि मोइट लिखिथिली पड़ गला इंडिया पाखरे रही छि 69 लाख्स रो रिजर्व्स हैला तो दैट मींस हमें कहि परिबा इंडिया होल्ड्स अराउंड 6% of the world's rare earth reserves indicating substantial untapped resource potential माने पोटेंशियल तो बहुत अच्छी है तुम कहले ना रेयर माने नुह कि इट कैन नॉट बी फाउंड इट कैन बी फाउंड बट हमें करूनु बहुत पोटेंशियल अच्छी कि हैला
सो आम इम्पोर्ट डिपेंडेंट तो रोचु है। इंडिया imported एतिकी tons 2270 tons of rare earth elements, indicating a moderate dependence on external sources. And India is currently capable of extracting the light rare earth element from monazite rich beach sands, especially along the coast of Kerala. Kerala रे बहुत heavily हमको मिली जीवो है ना light rare earth elements उड़ा. Okay. So ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ focus କରିବା କଥା. Heavy rare earth ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, India lacks the technological and industrial infrastructure for refining heavy rare earth. तो heavy rare earth रो market भी बहुत छोटो है ना. तो ता ପାଇଁ ତାକୁ refine କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ infrastructure ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ. तो ସେଠି ଆମେ posing a strategic vulnerability in the critical mineral supply chain. है ना. Significance of rare earth for India. As we know, रेयर अर्थ आमर बहुत जगह यूज होला. एंड जो आम इंडिया कथा कहूँ, इंडिया बर्तमान आम फोकस करूँ क्लीन एनर्जी उपरे, आम फोकस करूँ ईवी मान बुझिपाल. तो ये सब जिनस आमको रेयर अर्थ दरकार है. तो इट इज वेरी इंपोर्टेंट. डिफेंस एप्लिकेशन रे दरकार फाइटर जेट आम जो आम आत्मनिर्भर भारत कथा कहूँ, तो से आमको निजे ये सब जिनस आमर को कंट्री ऊपर बेसी डिपेंडेंट न है कि आमे केमिति एक्सट्रैक्ट करि परिबा इंडिया भीतर सेटा हमर फोकस रही छि. आ फोकस रहइबा कथा भी, बिकॉज़ ए सब जिंस रे तमरो रेयर अर्थ यूज होछ हैला. रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र रे भी यूज होछि. तमरो हाई एफिशिएंसी मोटर रे बहुत इंपोर्टेंट टरबाइन्स गुडा करे ए सब जिंस रे इंपोर्टेंट. तो इंडिया रे जो हमरो टारगेट रही छि, एनर्जी गोल रो टारगेट रही छि 2030 रो, ताको मीट करिया पे हमको रेयर अर्थ दरकार पड़िबो. ग्लोबल सप्लाई रिस्क जेमती आमे एबे देखुछु, चाइना पाखरे 60 to 70% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन रो कंट्रोल रोज हैला. तो जेतेबे चाइना सहित आम जदि किछ प्रॉब्लम हबो, देन हमको सेठु भी जेबे एबे चाइना जोटा यूएस सहित करूछि, आम सहित भी सेटा करि न करियो बिले कोन गारंटी हैला. स्ट्रेटेजिक वैल्यू, इट इज स्कार्स एंड क्रिटिकल. रेयर अर्थ एंश्योर टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी. सेति पय ए सब जियोपॉलिटिकल जिंस को देखि कि आहुरी बहुत इंपोर्टेंट हे जाउछि कि आमे आत्मनिर्भर आउरी हबा रिगार्डिंग दिस रेयर अर्थ एलिमेंट्स. आमे आ कहा पर फोकस करिबानी, बिकॉज़ एमितिया थ्रेट्स भी देखिया को हमको मिली पारे. ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर बिहाइंड इंडिया's लिमिटेड प्रोडक्शन? लो इकोनॉमिक वायबिलिटी. तो रेयर अर्थ आर एबंडेंट, बट तमरो कंसंट्रेशन लो होची, तो ताको कॉस्ट दरकार पड़िबो ना एनहांस करिया पे, ताको एक्सट्रैक्ट करिया पे. तो सेति पे टिके एटा जेतु कॉस्टली होची, तो दैट इज वन प्रॉब्लम. रेस्ट्रिक्टिव माइनिंग रेगुलेशंस, हमर बहुत सारा माइनिंग रेगुलेशंस रहि जाउची हैला. रेयर अर्थ एलिमेंट्स सेमान को हमें एटॉमिक मिनरल हिसाब रे क्लासिफाई करिछु. तो सेति पई माइनिंग राइट्स हिसाब रे देखिया गले टिके रेस्ट्रिक्शंस हमर रहि जाउची. जेमति कि हमर गवर्नमेंट एंटाइटीज इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, केएमएमएल, ए माने टिके लिमिट कर दोछन. प्राइवेट सेक्टर हेटी इनोवेट करि परना. तो जदि प्राइवेट सेक्टर टिके इनोवेशन एटी करिवे एंड टिके हमें रेस्ट्रिक्शंस टाको लूज करबा, देन ए क्षेत्र रे टिके हमें सुविधा हे परिबा. हमको लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन पीएसयूज हैला. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जोड़ा को अछि, आईआरएल हैला, जेमते आ अदर पीएसयूज हैला, से माने प्रॉफिटेबल मिनरल को अधिक प्रायोरिटाइज करंती हैला. एंड मिनिमल इन्वेस्टमेंट करंती आरएनडी रे. आमे जानछु आरएनडी रे मैं जेतिकी इन्वेस्ट करिया कथा सेतिकी इन्वेस्ट करूनु. तो जदि आमे आरएनडी रे इन्वेस्ट करिबानी, देन केमिति सब जिंस हेई परिबो. तो आरएनडी ऊपर टिके इन्वेस्ट करिया पड़े, बिकॉज़ आरएनडी ऊपर इन्वेस्ट कले ही आमे ताको केमिति कॉस्ट इफेक्टिव वे रे एक्सट्रैक्ट करि खबो, से जिंस गुडा को भी आमे खोजी के पाइबे ना रिसर्च करले हैला. केमिति आमे ताको कॉस्ट इफेक्टिव वे रे एक्सट्रैक्ट करि परिबा, प्रोसेस करि परिबा, ए सब जिंस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रेयर अर्थ रो एक्सट्रैक्शन एंड ए सब जिंस हैला. disjointed R&D ecosystem, as I said, कि the atomic mineral tag hinders collaboration. So this isolates your rare earth development from academia industry partnerships. हैला. तो आमे ताको जेतु atomic minerals अंडर रखि दोछु,
तो तमर एक तो प्राइवेट पार्टनर्स माने प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करि पारनांदी आ तमर एकेडमिक पार्टनरशिप एकेडमिक आ इंडस्ट्री रो पार्टनरशिप भी हे पारु हैला जदी सेटा हुए देन हमको गोटे पॉजिटिव पॉइंट एथि मिली पारे ओके बैन ऑन बीच सैंड माइनिंग बीच सैंड माइनिंग ऊपर भी हमर बैन लागि के रहिछि 2016 टू थोरियम कंजर्वेशन लिमिटेड एक्सेस टू मोनाजाइट रिच बीच सैंड्स causing supply bottlenecks in लाइट रेयर एलिमेंट जोटा कि हम केरला रे मु कहली केरला रे बहुत एबंडेंटली जिनसटा मिलुची हमको बट ए सब रेस्ट्रिक्शंस रहि जाउची जोठी पई कि हमर प्रोडक्शन ता लिमिटेड होची बट इट इज हाई टाइम कि हम ए सब जिनसटा को टिके अधिक फोकस करिबा दरकार ओके सो एज आई ऑलरेडी सेड चाइना रो मोनोपोली रहुची रेयर अर्थ मार्केट रे हैला इट constitutes nearly 90% of the global refined output rare earth and it also dominates the supply of the rare earth magnets. Recently, China new export का जो सब लगेइछि 12टा rare earth element उपरे सेटा तमरा यूएस सहित तांगर ट्रेड टेंशन्स देखिया को पाउछ बट एठु हम गोटे शिक्षा भी पाउछु काहे कि हमको आउ टिके फोकस करिया को पड़िबो हमर प्रोडक्शन टाको हमें इंप्रूव करिबा केमति बुझ पालो सो सप्लाई रिस्क तो रोची इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 90% आमे चाइना ठू 90% इंपोर्ट करूछु हैला हमरो ईवी क्षेत्र रे यूज होची सेमीकंडक्टर यूज होची डिफेंस सप्लाई यूज होची तो हमें 90% चाइना ऊपर डिपेंडेंट होछु दैट इज अ बैड थिंग इंपोर्ट बिल राइज रेयर अर्थ टैरिफ्स आउ कर्व जो चाइना लगौची तो सेथरे हमको खर्च तो हब निहाती है टिके लॉस तो हब निहाती strategic opportunity india holds 9 million tons of rare earth reserves है तो दैट मीन्स आम पाखरे स्कोप अच्छी आम पाखरे पोटेंशियल अच्छी बट आमे ए रेस्ट्रिक्शन पाई फंडिंग पाई यू नो आरएनडी जिंस पाई ए सब जिंस पे आमे टिके पछो रहि जाउछ अदरवाइज आम पाखरे स्कोप निहाती अच्छी आम पाखरे पीएसयूज भी अछंती क्रिटिकल मिनरल मिशन मु तुमको कहली आमे रिसेंटली लॉन्च करी जे सब जिंस अच्छी दैट मीन्स पोटेंशियल अच्छी आपण आउट के हमको फोकस करिया को पड़े जियो पॉलिटिकल लेवरेज जदि आमे सब करू तो इंडिया रो पोजीशन को स्ट्रेंथन आमे निहाती कर परबा क्वाड रो जो क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप अछि आ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अछि ए सब क्षेत्र रे इंडिया रो पोजीशन स्ट्रेंथन हे जिवो जदि आमे ए जिंसटा को फोकस करबा तो हैला आ ग्लोबल सप्लाई चेन भी ऑब्वियसली डाइवर्सिफाई हे जिवो सो इट इज हाई टाइम कि आमे केमती रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ऊपर जहाँ भी बैन वगैरह अच्छी माइनिंग रिलेटेड ऊपर है आउ तमर फंडिंग ऊपर आउ टिके इन्वेस्टमेंट जेमती अधिका हो टिके भाबिबा कथा प्राइवेट सेक्टर रो तमर कोलैबोरेशन हो पब्लिक सेक्टर सहित एंड एकेडमिया आउ इंडस्ट्री रो कोलैबोरेशन हो ए सब हमको फोकस करिया को पड़िबो ओके सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर प्रोडक्शन जदी प्रोडक्शन बढ़ेबा देन हमें जियोपॉलिटिकली भी टिके स्ट्रांग पोजीशन में रही परिबा हैला बिकॉज चाइना सहित हमको टिके वर्तमान केयरफुल है कि जिंस करिया को पड़िबो क्लियर ओके सो सब जिंस गोटा टिके देखि दबो एंड एज आई सेड वे फॉरवर्ड रे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमको सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन विषय रे पढ़े को पड़िबो तुम ऑलरेडी कहली हमरो जो माइनिंग अच्छी और रिफाइन माने माइनिंग इंडिया भीतर तो हमको माइनिंग रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करिया को पड़िबो ही पड़िबो और अलग कंट्री सहित भी हमको पार्टनरशिप करिया को पड़िबो हमें 90% चाइना रु आणुछु हैला एंड वर्तमान यूएस कौन गला वर्तमान यूएस ऑस्ट्रेलिया सहित पार्टनरशिप कला ऑस्ट्रेलिया सहित पार्टनरशिप करूची आमे भी सेमती किछि करिया को पड़िबो हमरो पार्टनरशिप हमको डाइवर्सिफाई करिया को पड़िबो ऑस्ट्रेलिया अछि वियतनाम भी हमरो सेकंड लार्जेस्ट रेयर अर्थ अछि तो तांको सहित हमर रिलेशंस भी भलो अछि तो तांको सहित हमें पार्टनरशिप करिया को पड़िबो अफ्रीका सहित हमको पार्टनरशिप करिया को पड़िबो हैला ए सब कले आमे टिके चाइना ऊपर हमरो डिपेंडेंसी भी कमे परिबा ओके सस्टेनेबल माइनिंग करिया को पड़िबो स्ट्रेटेजिक स्टॉक प्राइस बनाया को पड़िबो माने हमको रेयर अर्थ रिजर्व क्रिएट करिया को पड़िबो हैला सो दैट हमको सेमते किछि शॉक न मिलु चाइना जदी भी सेमते किछि बैन वगैरह लगे दिए हमको एते शॉक न मिलु हैला एंड प्रॉपर रिसाइक्लिंग भी करिया को पड़िबो तो ई वेस्ट रिकवरी नेटवर्क भी इंप्रूव करिया को पड़िबो जेमती एग्जांपल तमे देखि परिबो जापान रो अर्बन माइनिंग मॉडल जोथरे कि से माने ऑलरेडी जदी यूज हेछि गोटे जिंस
ताको आउ थरे रिकवर करी हबो हैला जेमते कि नियोडेमियम डिस्प्रोजियम याको थरे यूज कला पर ताको आउ थरे हम रिसाइकल भी करि परिबा तो ए सब जिंस टिके हमको फोकस करिया को पड़ेगा क्लियर okay so now since we have already discussed extensively on the rare earth element a question answer लिख परिबो india's dependence on imported rare earth elements presents strategic and economic challenges. Discuss their significance and outline the key limitations in developing a resilient rare earth elements ecosystem. Hello. So try to answer this question. ନିଜେ ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ try କର as I said ନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲେଖୁନ ତମେ ଯେତିକି ବି ପଢୁଛ everything is useless. ହେଲା ଯେତିକି ବି ପଢୁଛ ଯେତିକି ବି ଶୁଣୁଛ ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ବକବକ କହୁଛି if you are preparing for means ଏ ବର୍ଷ ହଉ କି ଆର ବର୍ଷ anyway ତମକୁ ଦରକାର answer writing ହେଲା so ଏବେଠୁ ହିଁ ଲେଖ ଯଦି ବି ତମେ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ prepare କରୁଛ ଏଇ question ଯଦି ମୁଁ ଦଉଛି try to answer because ତମ ପାଖରେ PDF ଏଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ PDF ପାଖରେ ତମକୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ହେଲା content ତମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ବାସ୍ ତମକୁ ନିଜେ ଲେଖିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ चलो so now can you answer this छोटो question एटी ଗୋଟେ ରହିଲା ଦିଟା statement ଦେଇଛି ହେଲା some rare earth elements are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors some rare earth elements have phosphorescent properties can you answer me which statements are correct or not है ना comment रे answer करो next class हम एटा discussion next science and tech रो ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଥିଲା ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2 ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ସୋ କଣ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା ବାଇ ଦ ୱେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2 ରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ତମର ଚାସ୍ 2 ପେଲୋଡ ହେଲା ଚାସ୍ 2 ପେଲୋଡ ଯାଇଥିଲା and ସେ କିଛିଟା ଅବଜର୍ଭେସନ କରିଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଲୁନାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହେଲା ଲୁନାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ମାନେ ଏଠି ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଦେଖ ଦିସ୍ ଇଜ योर मून ହେଲା तो मून लूनर माने ऑब्वियसली मून आमे बुझुछु सो लूनर एक्सोस्फियर ऊपरे किछिटा ऑब्जर्वेशन तमरो करिछि चंद्रयान 2 ओके इंडिया चंद्रयान 2 लूनर ऑर्बिटर कोटा चास 2 से ऑर्बिटर रो नाम माने चास 2 तो ऑर्बिटर आ जो पेलोड पठाई जाइतिला चास 2 से माने गोटे observation କରିଛନ୍ତି for the first time ever it has detected the effects of the sun's coronal mass ejection sun रो outer layer को हमें कौन कहू कोरोना ये जो outer layer को हमें कोरोना कहू तो coronal mass ejection रो effect कौन पडुची मून रो एक्सोस्फियर ऊपरे सेही जिंसटा स्टडी करिछि चंद्रयान 2 हैला the findings were obtained using chas 2 which is the payload जोटा पठाई जाइथिला तमरो चंद्रयान 2 सहित चास 2 रो फुल फॉर्म कोन चंद्रस एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड द ऑर्बिटर हैला तो ए जो कोरोनल मास इजेक्शन रोची तारो मून रो लूनर एक्सोस्फियर ऊपर कोन इफेक्ट पकोची सेटा से स्टडी करिछि हैला सो लूनर एक्सोस्फियर कोन द मून्स एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली थिन मून रो जो बाहरी एटमॉस्फेयर दैट इज एक्सट्रीमली थिन एंड ताको हम एक्सोस्फियर कहू जोथरे कि हमर गैस एटम्स अछि मॉलिक्यूल्स अछि से माने रेयरली कोलाइड करंती एंड कोन देखिया को मिले द सरफेस फॉर्म्स द लोअर बाउंड्री ऑफ द एक्सोस्फियर एंड सेथे तुमको हीलियम आर्गन नियॉन ए सब गैसेस हमें देखिया को पाऊ लूनर एक्सोस्फियर मून रो आउटर एक्सोस्फियर हैला सो जोथरे कि हमें रेडियोएक्टिव डिके सोलर विंड मेटेरियल इंपैक्ट सब जिंस हमें से एक्सोस्फियर देखिया को पाऊ एंड बिकॉज तारो डेंसिटी बहुत कम से हीट को रिटेन करि पारेनी हैला हीट को रिटेन करि पारेनी तो जोथि में कि तमरा एक्सट्रीम टेंपरेचर वेरिएशन देखिया को मिले लूनर एक्सोस्फियर हैला this fragile atmosphere is produced by several processes including interaction with solar radiation
and solar wind meteorite impacts that release atoms and molecules from the lunar surface. ହେଲା ତ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ତାର ଡେନ୍ସିଟି ବହୁତ କମ, ତାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବହୁତ ଫ୍ରେଜାଇଲ, ଏଟା କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ବିକଜ ଅଫ ଦ ସୋଲାର ରେଡିଏସନ ଆଣ୍ଡ ସୋଲାର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଏଠି ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି ଆର ଉପରେ, ହେଲା ସନ୍ ର ପାଖରେ ରହୁଛି ମୁନ, ତ ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନିହାତି ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ସେଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜାଇଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ସେଠକୁ ମିଳେ। ତ କୋରୋନାଲ ମାସ୍ ଇଜେକ୍ସନ କଣ? ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ମାସିଭ ଭାয়োଲେंट एक्सपल्शन ऑफ प्लाज्मा। ଏଇଟା ଆର ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ କରେ, ହେଲା ଆର ଟେମ୍ପରେଚର ତ ବହୁତ ଅଧିକା, ସନ୍ ର ଆଉଟର ଟେମ୍ପରେଚର ତ ବହୁତ ଅଧିକା। ତ ସେଇ କେସ ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାସିଭ ଭାয়োଲେंट एक्सपल्शन ଆମେ ଦେଖୁ, which is a superheated gas of protons and electrons, ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ସନ୍ ର ଆଉଟର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରୁ ବାହାରେ, କୋରୋନା ରୁ ବାହାରିଛି। ତ ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଫ୍ରମ ଦ ସନ୍ସ ଆଉଟର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, the corona that erupts outward into the solar system, ହେଲା ତ ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା ବାହାରିକି ସେ solar system ଆଡକୁ outward move କରୁଛି। Okay, so in that case it is one of the largest forms of solar activity and a major driver of space weather। Okay, so CHAS 2 କଣ? CHAS 2 ଆମେ ପଢିଲୁ already, ଏଇଟା ହିଁ ତମର observe କରିଛି କି କେମିତି ଏଇ କୋରୋନାଲ ମାସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରହୁଛି, ହେଲା ସେଇଟା କେମିତି ତମର ମୁନ ର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ଟାକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆ ଯୋଗୁ ତମର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଟେମ୍ପରେଚର ଭେରିଏସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୁନ ର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ରେ। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା କି ଅବଜର୍ଭ କରିଛି? ଚାସ୍ 2। ଚାସ୍ 2 ଟା କାହାର ପେଲୋଡ? ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2 ର, ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2 ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଲୋଡ। It is developed by ISRO। ISRO develop କରିଛି to study the composition and dynamics of the moon's extremely thin atmosphere, ଯାହାକୁ ଆମେ lunar exosphere ବି କହୁ। ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2 2019 ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ପେଲୋଡ ଟା, ହେଲା as a part of the ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2 mission, and କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା? GSLV Mark 3 M1 rocket through କରାଯାଇଥିଲା। ତାର main goal ଥିଲା to analyze the chemical composition, spatial and temporal variations and density of the lunar exosphere, ହେଲା and ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 1 ରେ CHAS 1 ପଠାଯାଇଥିଲା, ହେଲା ଆଉ ମେନକା ବି ପଠାଯାଇଥିଲା, which we have already discussed। ଯଦି ତମମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିନ, ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଗୋଟେ 4 hour ର ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଇନ ଡିଟେଲ କଥା ହେଇଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 1 2 3 ବିଷୟରେ, 4 5 ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେଇଛୁ, ଯେତିକି ବି ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛୁ। ସେ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଦେଖିନ, ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ ଥର, ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ରେ ହଉ ଥରେ ବି ଦେଖିଦିଅ, କି ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି କୋଉଥିରେ ପେଲୋଡ କଣ, କୋଉଥିରେ କୋଉ ପେଲୋଡ ୟୁଜ ହେଇଥିଲା, ହେଲା। तो चास तो ऑलरेडी तमरो मार्स ऑर्बिटर मिशन रे यूज हेची, चंद्रयान 1 रे यूज हेची, तारो बड़ भाई हमें कहि परिबे चास 2, जोटा कि चंद्रयान 2 रे यूज हेथिला, हैला। तो सी बेसिकली तमरो आर्गन 40 टा को भी डिटेक्ट करि परिबो, हैला तार कैपेबिलिटी अछि सेटा, एंड से लूनर सरफेस टा को मॉडल करके ताको स्टडी करि परिबो, हैला। इट दैट इज द एम ऑफ द चास 2। ओके, सो वर्तमान एज वी हैव सीन, it has recorded the first ever evidence of a CME induced rise, coronal mass ejection जोकु तमरो lunar exosphere रे temperature rise होउची, हैला। एटा केबे ऑब्जर्व करथिला? मे 10 2024 रे एटा से ऑब्जर्व करथिला, एबे रिसेंटली एटा न्यूज रे आछि। सो व्हेन सोलर इजेक्टर स्ट्रक द मून, तो ए जो कोरोनल सन रो ए जो कोरोनल इजेक्शन ये जाय कि मून सहित बाडे हेतिला, तो मून सहित जब बाडे ହେଲା ତ ତାର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର जो बहुत थिन एटमॉस्फेयर, बहुत फ्रेजाइल एटमॉस्फेयर, तो सेही तार टेम्परेचर टा बढ़ी गला, ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ହେଲା ମୁନ୍ ସହିତ, ବୁଝିପାରିଲ। ସो ଇଟ୍ ଅବଜର୍ଭଡ ଏ 10 fold increase, ମାନେ 10 times ତମର increase ହେଲା in total number density of the neutral atoms, confirming long predicted theoretical models। It provided insights into how solar activity alters the lunar atmospheric condition, ହେଲା। तो सन ଆଉ मून ର रिलेशन ଅଛି, एंड केमिति आठु जदि गोटे जिंस आसिक एठी बाडे होउची, एटा निहाती इफेक्ट पकोउची मून ऊपर, हैला मून रो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऊपर इफेक्ट पकोउची, चेंज करूची, टेम्परेचर चेंज करूची।
सो एई जिनसटा हमकु जानिबा निहाती हेल्प करिवो हमर फ्यूचर जहाँ भी रहिला मून रो प्रेडिक्शंस ऊपर हैला. सो इट इज क्रुशियल फॉर फ्यूचर lunar based planning and space weather production. Clear? बुझिगला जिनसटा? Is it clear? କିଛି କମେଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଆସୁନି ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ୟା ଫିର ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାଉନ୍ସ ହଉଛି କଣ ହଉଛି? Is it clear? Can we move ahead? କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି can ask me. Okay, କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି. Okay, next topic ଆମେ ଦେଖିବା November 1 ରେ Kerala will be officially the first state free of extreme poverty. ହେଲା? It will be free of extreme poverty and not poverty. ମନେ ରଖିବ. ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମେ ତମେ ଟୋଟାଲ पुअर पीपल देखिया को पाइबनी केरला रे. दैट इज नॉट द टॉपिक हियर हैला. एक्सट्रीम पॉवर्टी देखिया को पाइबनी. एक्सट्रीम पॉवर्टी कोन सेटा हमें पढिबो. बट ये आर्टिकल तक टिके हमें देखिबा कि दो थ्रू द एक्सट्रीम पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2021 2021 रे गोटे एक्सट्रीम पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोजेक्ट केरला लॉन्च करथिला जोथरे के से बहुत सारा माइक्रो प्लान्स बनैथिला प्रति फैमिली पे एंड सेथरे से आइडेंटिफाई करथिला एक्चुअली तमरो एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर रे केतेटा फैमिलीज आसंती केरला रे सेटा जानिले ही तो से ताको एराडिकेट करिवा विषय भाब परिबो. So according to the Niti Aayog ro 2021 study हिसाब रे Kerala is the state with the lowest poverty rate. हला एमित रे भी 2021 रो Niti Aayog रो study हिसाब रे Kerala is the lowest poverty rate अछि ता पाखरे हला बहुत कम poor people अछंती जोथरे कि तमरो 0.7% of the total population तमरो poverty rate रे रहउछन. सो गवर्नमेंट ए जिनसटा को नहीं थिला माने केरला गवर्नमेंट ए जिनसटा को गोटे लीड ने कि से फर्स्ट फाइंड आउट कला कि ए 0.7% भितरो एक्सट्रीम पॉवर्टी रे को माने रहउछन हैला ताको तो हम एड्रेस करी कि एराडिकेट करि परिबा. So after ground level surveys 64,000 families were identified as extremely poor. हैला केते 64,000 families गुडा को extremely poor थिले. And एटा से केमिति आइडेंटिफाई कला ऑलरेडी माने ताको हमें डिस्कस करिबा एक्सट्रीम पॉवर्टी हमें काहा को कहबा बुझपाल. तो बट एपे एति जानो कि 64,000 families से माने एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर रे थिले. तो वर्तमान से मान को से एक्सट्रीम पॉवर्टी रो केरला बाहर करतला जोथि पय कि इट विल बी द ऑफिशियली द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी. ओके, so Kerala will be officially declared free from extreme poverty, marking a national first in poverty eradication. To access this, Kerala relied on the Niti Aayog ro 2021 ro जो कहले डाटा MDPI डाटा जोटा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रो डाटा को नहीं कि से फाइंड आउट कला कि 64,000 फैमिलीज तांगर रहउछन्ते एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर रे ताको केमती इराडिकेट से करि परिबा. तो ता पे से ऑलरेडी गोटे मॉडल बनेला व्हिच इज द एक्सट्रीम पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोजेक्ट 2021 रे से सेटा को स्टार्ट करितला हैला. तो ए जो 64,000 फैमिलीज से भितरु तमरो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जदि हमें देखियो 1,30,000 और कहि पारे 1,30,99 इंडिविजुअल्स ए फैमिली भितरु से माने एक्सट्रीमली पुअर थिले. 21 families essential documents receive कले 4,000 families पाखापाखी को नुआ घर प्रोवाइड करा गला एंड 1,300 families को लैंड प्रोवाइड करा गला. ओके, एंड 5,600 families they received up to 2 lakh each for their house renovation.
ताको हाउस रिनोवेट करिया पे 5600 फैमिलीज को 2 लाख टंका प्रोवाइड करा गला इच फैमिली हैला अप टू हैला नॉट एग्जैक्टली 2 लाख बट अप टू 2 लाख प्रोवाइड करा गला ताको हाउस को रिनोवेट करिया पे एंड 3800 फैमिलीज को लाइवलीहुड असिस्टेंस प्रोवाइड करा गला बुझिपारे एतिक सब जिंस केरला करी आछि 2021 रु तेबे जायकी से 2025 रे extreme poverty to free ହେଇପାରିବେ so this becomes the role model for other nations or sorry other countries କହିପାରିବେ other states india ର ବାକି states ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ example set ହଉଛି କି କେମିତି ସେ identify କଲା and କେମିତି କାମ କଲା ତାରି ଗାଡି ହେଲା so MDPI ର ଡାଟା ନେଇକି ସେ ଜାଣିଲା କି କେତିକି ତାର ରହୁଛନ୍ତି ସେ particular framework ରେ ମାନେ particular benchmark ରେ extreme poverty ରେ କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି କେତେଟା families କେତେଟା individuals ତାଙ୍କର କଣ problems and କେମିତି ତାକୁ deal କରାଯିବ ହେଲା ସେତିକି ସବୁ ସେ କଲା finally ସେଇ stage କୁ ଆସିପାରିଲା so ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି extreme poverty ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା those who are living on less than $2.15 per day ହେଲା according to the World Bank extreme poverty is defined as living on less than $2.15 per day representing absolute deprivation. $2.15 माने इंडिया आईना हिसाब रे केते हो इंडियन करेंसी हिसाब रे केते हो केते हो 189.66 rupees to be specific हैला तो जो माने आ तळु को कमाउछन और बंचुछन हैला दिनु एरा मु पर डे हिसाब रे कहूची जोटा कि वर्ल्ड बैंक तमरा डिफाइन करिछि तो ए अंडर रे जो माने रहउछन ताको हमें कहबा एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर रे से माने रहउछन सो 2025 रे वर्ल्ड बैंक अपडेटेड द एक्सट्रीम पॉवर्टी बेंचमार्क टू $3 पर डे हैला केबे एटा कला 2000 एई वर्ष ही से करिछि वर्ल्ड बैंक आपको अपडेट करिछि आगुर थिला $2.15 एबे कर देला $3 so $3 अंडर जारो इनकम माने लिविंग एक्सपेंसेस रहउथबो हैला से माने तमरा एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर रे आसी बुझपलो एटा से वर्तमान वर्ल्ड बैंक अपडेट करिछि तो एटा के डिसाइड करे एक्सट्रीम पॉवर्टी रो डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक डिसाइड करिछि ओके खास करके तमरा लो इनकम कंट्रीज मन को पे ओके बिकॉज लिविंग कॉस्ट भी बढ़ुछि धीरे धीरे तो हमें से हिसाब ताको भी कंसीडर करे पड़े इन्फ्लेशन होची सब जिंस को कंसीडर करे कि ए जो रेशियोटा वर्तमान बढ़ी जाइछि और बेंचमार्क रा तमरा बढ़ी जाइछि measurement basis it uses purchasing power parity to compare cost of living across countries and the household consumption expenditure survey data as a proxy for income okay so extreme poverty signifies absolute poverty unlike relative poverty which measures inequality within societies okay तो absolute poverty सहित हमें करि परिबा similar extreme poverty को relative poverty सहित हमें आपको similar करि परिबनी हैला relative poverty तमरे यूज हुए inequality को मेजर करिया पे extreme poverty यूज हुए नहीं एना मन रखियो तो कौन इंडिकेटर्स अच्छी लैक ऑफ एक्सेस टू एसेंशियल्स भी मिलु नथबो से मानको माने फूड सिक्योरिटी नथिबो सेफ हाउसिंग नथिबो हेल्थ केयर फैसिलिटीज नथिबो एजुकेशन फैसिलिटी नथिबो क्लीन वाटर नथिबो सैनिटेशन नथिबो ये सब जिंस जदि हमें तांको प्रोवाइड करि दउ देन हमें तांको सेही बेंचमार्क टू बाहर करि परिबो हैला जोटा कि केरला कला सो इंडिया रो एक्सट्रीम पॉवर्टी जदि हमें देखिबा इंडिया हैज अचीव्ड मेजर सक्सेसेस in reducing the extreme poverty through inclusive growth and welfare based redistribution over the past decade तो आमे जो मनरेगा कार्यक्रम आनिथिलु पीएम आवास योजना कलु नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आनिलु आयुष्मान भारत आनिलु ए सब जिंस निहाती हेल्पफुल हैला हमरो पॉवर्टी इराडिकेशन ऊपर हैला जो माने लोअर बेंचमार्क रे रहि छिले से माने निहाती ऊपर को आसी पाले थैंक्स टू ऑल दिस इनिशिएटिव्स हैला रूरल क्षेत्र रे सब जिंस तमरो पहुंची पाले okay and to be specific ये डाटा गुड़ा को बहुत important है ना as per World Bank India's extreme poverty rate decline करिछ 2025 रो डाटा एटा 27.1% जेतबेले थिला 2012 रे वर्तमान इंडिया रो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट होची 5.3%
सो 27% ରୁ 5.3% को हमें डिक्लाइन करिछि इंडिया रो पॉवर्टी रेट ओके सो इट इज ह्यूज एंड कोन पाइटा करिछि बिकॉज ऑफ ऑल द स्कीम्स दैट वी हैव बॉट इन द लास्ट 10 इयर्स हैला रूरल क्षेत्र रे भी एटा बहुत हेल्पफुल है जाय कि सेमान को पाखरे पहुंची पारिछि जोथि पय कि हमरो ए जो रेशियो टा कमी पारिछि बुझ परलो एंड इट इज द फास्टेस्ट रिडक्शन ग्लोबली जेति के भी कंट्रीज देखो सबुठु अधिका हमें एटा रिड्यूस करि पाछु इंडिया इज माने कैपेबली माने इंडिया गोटे एग्जांपल साजिछि सेमान को बहुत ड्रास्टिकली माने 10 इयर्स रे एति की कमेबा इट्स नॉट इजी ओके so nearly 270 million people are lifted out of extreme poverty एटा ओ इंडिया हिसाब रे मु कहूछि ओके एंड टोटली एक्सट्रीम पॉवर्टी टू फ्री हे पारिछि केरला नो डाउट हेलो इंडिया रो बट ग्लोबली यदि हमें देखिबा इंडिया रो नियरली 270 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी टू बाहर कर पारिछु हमें हेलो तो दोस हु आर लिविंग बिलो द $3 per day threshold हेलो से माने आगुरु थिले तमरो 344 मिलियन थिले एंड वर्तमान 75 मिलियन को पहुंची पारछु हमें माने आगुरु लोको एक्सट्रीम पॉवर्टी रे केते जने थिले 344 मिलियन थिले वर्तमान केते अछन इंडिया रे 75 मिलियन अछन है तो दैट मींस हमें 270 मिलियन पीपल को बाहर कर देछि एक्सट्रीम पॉवर्टी ओके सो एक्सपांशन ऑफ द डीबीटी दैट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स मिलुची तांगु पीडीएस कवरेज मिलुची रूरल एम्प्लॉयमेंट हमें प्रोवाइड करि पारछु ए सब दृष्टि रो तांगु प्रॉपर इनकम सिक्योरिटी भी दउछु हला कंजम्पशन स्टेबिलिटी दउछु जोथु के माने जोथि पई हमें अचीव करि पारिछु ए सब पर्टिकुलर नंबर्स ओके आर यू क्लियर ओके इंडिया रो डाटाटा हमें देखिदलो ए डाटाटा तुम लिखिबो तमर कौन कहलो इकोनॉमी रो पॉवर्टी तमें जो फैक्ट बुक बनईछ है फैक्ट बुक बनईछ कि जीएस रो नोट्स अच्छी यू कैन अपडेट दिस एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्तमान इंडिया रो केते स्टैंड्स अच्छी माने केते तार कोन तार पोजीशन अच्छी केते मिलियन वर्तमान हमरो अछंती करेंटली एक्सट्रीम पॉवर्टी ए सब जिंस तमें मेंशन कर परिबो ओके एंड दिस आर द वर्ल्ड बैंक डाटा ओके विच वर्चुअल केते इंपोर्टेंट ओके सो केरला कौन अचीव करिछि बेसिकली Kerala has been officially declared free from extreme poverty, becoming the first Indian state to achieve this feat. बहुत क्षेत्र रे केरला तमरा फर्स्ट इंडियन स्टेट हैला बहुत क्षेत्र रे आमे बहुत सारा न्यूज़ पे देखिछु टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे हो एजुकेशन क्षेत्र रे हो सब क्षेत्र रे केरला प्राय माने आगुआ थाए हैला इवन जदि हमें देखिबा मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो भी केरला रे सबरो कम थिला इफ यू रिमेंबर हमें सेटा भी डिस्कशन करथिलु चलो सो द एक्सट्रीम पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम जोटा से 2021 रे इनॉग्रेट करिथिला सेबेठु ही से तारो आ ऊपर काम करिया स्टार्ट करि दिथिले ओके एंड एज आई सेड आउट ऑफ 64,000 फैमिली 59,000 फैमिलीज को अपलिफ्ट करा दगला हैला तांगर हाउसिंग को केमिति फोकस करा गला केमिति पैसा को फंडिंग करा गला हाउसिंग रिनोवेशन ऊपर फोकस करा गला हेल्थ ऊपर फोकस करा गला लाइवलीहुड ऊपर फोकस करा गला बुझ परछो ए सब को फोकस करिकि से जिनसटा को अचीव करि परला सो एज आई सेड 3900 फैमिली पे घर से बनेला जा पाखरे लैंड नथिला जो फैमिलीज मान को पाखरे 1300 फैमिलीज को से लैंड अलॉट कला अप टू 2 लाख प्रोवाइड करा करिला से 5000 प्लस होम्स को तांगर घर रिपेयर करिया पे जा पाखरे बेसिक हमर राशन कार्ड नथिला आधार कार्ड्स नथिला से मान को से इश्यू करला पाखा पाखी 21000 इंडिविजुअल्स मान पाखरे ए सब एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ही नथिला ताको से इश्यू कला so each family was covered through a micro plan integrating state welfare schemes and social audits with geo-tagged verification है ना प्रति आइडेंटिटी माने फैमिली को से आइडेंटिफाई करिए प्रति फैमिली पे से माइक्रो प्लान बनेला केरला ओके एंड केरला हैज नाउ 0% एक्सट्रीम पॉवर्टी एंती कहि परिबा नै कि टोटली पुअर पीपल नाहंती बट एक्सट्रीम पॉवर्टी ना तो एबे तो हमें आउ टिके इजीली मन रख परिबा एक्सट्रीम पॉवर्टी हमें कहा कहि परिबा $3
अंडर रे जहार लिविंग माने इनकम तमरो रहउथबो से माने एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर आसिक ओके सो केरला हैज नाउ 0% extreme poverty aligning with UN sustainable development goal SDG 1 कौन हमरो poverty तमे जानथिबो no poverty right zero poverty or no poverty तो सेटा से रीच करि परछि केरला सो हमरो भी जो टारगेट अछि कि बाय 2030 we have to eradicate poverty इंडिया रे तो ता रिगार्डिंग एटा गोटे वेलकमिंग स्टेप निहाती okay so this achievement demonstrates Kerala's model of inclusive governance where local bodies irrespective of political control collaborated to ensure the last mile welfare delivery तो local bodies जो माने भी रहिले माने एमती नुह कि एबे जेमती हमर एटी बीजेपी बीजेडी ए सब चली छी ना कि बीजेपी तो सेंट्रल लेवल रे अछि एटी जदी बीजेडी अछि कि तमरो म्युनिसिपलिटीज रे कि पंचायत रे तमरो तो बीजेपी नथिबे सब जगह रे है ना तो से माने पॉलिटिक्स टाकू भी छाड़ी की से माने फोकस कले केमिति लास्ट पर्सन पर्यंत तांकर ए जिंसटा पहुंची परिबो हैला एंड से माने कोलैबोरेट हिसाब रे काम करी कि जिंसटा को अचीव करि पारे बुझबेलो so this was all about your extreme poverty related Kerala जोटा achieve करि पारे any doubt regarding this any doubt କିଛି doubt ଅଛି or will move forward okay next ଆମେ ଦେଖିବା soar module soar ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ନ୍ୟୁଜ ରେ एंड एटा पीआईबी रे आस्थिला बेसिकली किछि सेमि न्यूज पेपर आसी नथिला सो पीआईबी टा को भी टिके देखुथबो रेगुलरली पीआईबी रे कोन आछी दैट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस माने न्यूज पेपर ठु भी अधिक तमे कहि परियो पीआईबी रे जहा आछी दैट इज इंपोर्टेंट फॉर अस ओके तो पीआईबी रे आस्थिले सोर मॉड्यूल का टीचर हैला एआई फॉर एजुकेटर कोन एटा टिके देखिबा एटा हम एजुकेशन सहित भी रिलेट करि परिबा एटा हम टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे भी रिलेट करि परिबा हैला सो इट इज बेनिफिशियल फॉर पेपर 2 पेपर 3 सब पे एटा बेनिफिशियल हबो ओके so what is this it is the flagship initiative under the skill india mission which is designed to strengthen the AI literacy and competency among students and educators हैला तो it is an initiative under the skill india mission रे भी हमरो 10 years complete हे जाई छी सो ता अंडर रे एटा अना जाई छी सोर प्रोग्राम एंड जेते बेला हम टेक्नोलॉजी कथा कहूछु हम एआई कथा वर्तमान बहुत कथा होछु हैला एआई विषय रे सो ना एआई जिंसटा आमे केमते एजुकेशन को आणुछु एआई केते दरकार हमर स्कूल्स पई एआई केते दरकार टीचर्स मान को पई एआई केते दरकार हमरो स्टूडेंट्स मान को पई हैला तो ऑलरेडी ता रिलेटेड बहुत सारा आर्टिकल्स आसुची कि एआई केमिति समस्त पई बेनिफिशियल हे परिबो आ एथिकली आमे केमिति एआई टा को यूज करि परिबा हैला ता रिलेटेड भी आमे आउटे आर्टिकल आज देखिबो एआई रिलेटेड गोटे एथिकल जिंस भी आसीची न्यूज आर्टिकल रे ओके सेटा भी आमे देखिया बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द सोर प्रोग्राम so this program includes structured AI modules hands-on learning and ethics-based training to prepare India's youth for AI-driven careers. Okay. किए एटा को implement करिछि Ministry of Skill Development जेहेतु एटा Skill India Mission under आछि so Ministry of Skill Development and Entrepreneurship आपको implement करिछि in coordination with the Ministry of Education. So एटा दीटा जाको ministry involved अछंती MSDE plus Ministry of Education. Data ministry involved अछंती okay what is the aim to create AI awareness among school students and educators to equip India's youth with industry relevant AI skill industry रे कोन AI skill दरकार पड़े हैला ताको फोकस करिकि जिंसटा बना जाई छी ओके जेतबेला हम आत्मनिर्भर भारत कथा कहूछु सेल्फ रिलायंस कथा कहूछु हमें एआई टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करे अछि टेक्नोलॉजी को भी आनियार अछि ना तो ताको हमें केमिति इक्विप करि परिबा इंडिया रो यूथ मान को पाखरे केमिति नै के हमें पहुंचे परिबा सो सबटु बेस्ट प्लेटफॉर्म हला स्कूल्स एंड कॉलेजेस राइट यूथ मान को पाखरे कोटी जिंस पहुंचे पाए सबटु बेस्ट प्लेटफॉर्म हला स्कूल और कॉलेजेस तो सेथरे जो यूथ माने अछंती ताको हमें केमिति
proper training dei pariba related to AI, so that will be beneficial for industry as well. Which part? So it is basically to bridge the digital skill gap between the urban and the rural learner. तो रूरल क्षेत्र रे भी जो स्कूल अछि सेठी भी केमती जिनसटा पहुंची परिबो, that is also the target. So structured learning modules ରହିବ. Learning modules माने already pre recorded किछि modules ରହିବ. तमरो 15 घंटा AI modules रहिछि स्टूडेंट्स मानक पई आ 45 आवर एडवांस मॉड्यूल रहिछि तमरो एजुकेटर्स मानक पई. हला जुथरे कि ताको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जिवो. And particularly ethical AI training provide କରାଯିବ କେମିତି ଆମେ responsible use କରିପାରିବା AI ର ହେଲା. Even BRICS ରେ ବି କଥାଟା ଉଠିଥିଲା କି responsible AI use ଆଉ ତା regarding particular हमको acts भी आने को पड़िबो कि लोक जो edit କରିକି फोटो वगैरह छाडुचंती AI generated contents छाडुचंती सेमिति करिया कथा नुह. एंड खास करके एटा हम स्टूडेंट्स मानको पाखकु भी पहुंचीबाटा निहाती दरकार हैला. सेति पे एथिकल AI ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जिवो. एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI गोटे बना जिवो. ता पे ऑलरेडी 500 crore allocate हेच यूनियन बजट रे हैला. To establish a dedicated center of excellence for AI in education, 500 crore allocate हेछि आ पे. तो सेथिरे तमरो इंडस्ट्री इंटीग्रेशन रहइबो. जेतिकी भी आईआईटीज अछि एआईसीटी आईआईटी एमान को भितरे कोलैबोरेशन हबो. प्राइवेट सेक्टर पार्टनर सहित कोलैबोरेशन हबो जो माने कि स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ मशीन लर्निंग कोर्सेस गुडा को प्रोवाइड करिवे स्कूल्स गुडा करे हैला. तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विषय हम पढिथिलु हैला. एंड मशीन लर्निंग कोन तुम जानि थिबो सब जिंस गुडा ए सब जिंस केमिते हमें स्कूल स्टूडेंट्स को ट्रेन कर परिबा. आ स्कूल स्टूडेंट्स को जदि ट्रेन करे अछि प्रथमे हमको एजुकेटर मानको भी जिनसटा ट्रेन करने पड़े. बिकॉज समस्त तो अवेयर नथिबे टीचर्स माने दे आर नॉट अवेयर ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कोन कि मशीन लर्निंग कोन. प्रथमे तांको हमें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करिवा, तापरे स्टूडेंट्स मानको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिवा. एंड आईआईटी एआईसीटी सब प्राइवेट सेक्टर पार्टनर सहित प्रॉपर कोलैबोरेशन हम केमते करि परिबो. ओके. डिजिटल एक्सेस integration with Skill India Digital Hub to ensure accessibility for students across rural and urban areas. Okay. So Skill India Digital Hub अछि तो ता सहित केमिति हमें ताको इंटीग्रेट करके रूरल एरियाज पर्यंत भी रूरल एरिया रे जो स्टूडेंट्स अछंती तांको जाई भी एटा केमिति पहुंच परिबो सेरा भी देखियार अछि. ओके. Apprenticeship support under the NAPS 2 1480 apprenticeships trained between the financial year 2022 to 2026 in AI related roles such as AI data engineer rohela, machine learning engineer rohela. So apart from mechanical engineer, apart from civil engineer, एमितिया किछि पोस्ट भी अछि. डाटा साइंस भी पढ़ा होछि वर्तमान हैला. डाटा साइंस ऊपर पर्टिकुलर कोर्स अछि, ग्रेजुएशन कोर्स अछि, एआई ऊपर कोर्स आसिलानी. तो जदि ग्रेजुएशन जने जिंस ऊपर करियर अछि तो ताको स्कूल लेवल रे सब प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा जिबा कथा हैला. सेति पई जो तमे जानि थबो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जोटा हमरो गवर्नमेंट रो अछि स्कीम ता अंडर रे ऑलरेडी तमरो एते की अप्रेंटिसशिप मानको ए पर्टिकुलर रोल जॉब रोल पई ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जे सारी छी हैला. ए सब जिंस हमको मेंशन करिया को पड़ियो. जति एआई रिलेटेड तमरो किछि एसए भी आसी गला कि जीएस रिलेटेड जीएस रे तुमको एआई रिलेटेड किछि आसी गला ए सब जिंस तमे सेटे एक्सप्लेन करि परिबो. ओके. What is the significance? It promotes the AI literacy, embeds AI knowledge in early education, fostering innovation and curiosity, and it bridges the skill divide. Okay. तो जो माने जानी चंती ए विषय जो माने जानी नाहंती कि जो माने अर्बन एरिया से माने जानी चंती रूरल एरिया से माने जानी नाहंती तो ए गैप टाको हमको कवर करिया दछि, ब्रिज करिया दछि. ओके. एंड इट सपोर्ट्स द विकसित भारत विजन. सो 2046 रो जो हमर विकसित भारत विजन अछि देन हमको सेति सब क्षेत्र रे एडवांस करियर अछि मतलब खास करके हमर यूथ मन को सब जिंस जानिते बार अछि. So it advances the India's goal of becoming a developed nation through technology led empowerment. Okay, through technology led empowerment. Okay, so I think हमें क्लास का आज 18 में एंड करतबा.
ଆଉ ବାକି ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ ଆଉ କିଛିଟା ଟପିक्स ଥିଲା ଯେମିତି କି ସୋ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ ଜଷ୍ଟ ଅ ସେକଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ, ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ କଲୁ, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ରହିଗଲା। एंड तमरो केरला जॉइंस पीएम श्री एक्सट्रीम पॉवर्टी ओके ए दुटा जिनस आम डिस्कशन कलु, ये तीन जिनस रहीगला एंड एटा तो आम डिस्कशन कलु, एटा डिस्कशन कलु, एटा डिस्कशन कलु, ए जिनस रहीगला। सो ये जो जिनस गुड़ाक रहीगला एटा आम नेक्स्ट क्लास कवर करिए बिकॉज आई डू नॉट वांट कि एटा तमे आम स्ट्रेच करबा जिनसटा बट गोटे जिनस मु तुमको निहाती देखेबी एटा मु नेक्स्ट क्लास को नबा को चाहूनी which is the cup syrup tragedy। आम लास्ट क्लास रे जो पढ़ी कप सिरप ट्रेजेडी विषय मन अच्छी इन डिटेल भाव में पढ़ी राइट इफ यू रिमेम्बर कप सिरप ट्रेजेडी विषय पूरा इन डिटेल आम पढ़ी तो ता रिलेटेड गोटे आर्टिकल आछि बेसिकली है ये आर्टिकल टा टिके पढ़ी दबा ऑलरेडी आम सब जिनस पढ़िलु लास्ट क्लास ये जिनस भी आम देखी कि खूब माने प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव रे हमर कोन आंसर क्वेश्चन आसी परिबो कि बेसिकली से सिरप रे कौन अच्छी ना डाइथिलिन ग्लाइकल अच्छी 48% डाइथिलिन ग्लाइकल अच्छी जोटा कि 0.1% रहिबा कथा तो एतिके रहिबा कथा बट एतिके अच्छी which is 480 times higher than the permissible limit तो ए पर्टिकुलर जिनसटा यूज हेतिला से सिरप रे बुझ पालो तो ए रिलेटेड ऑलरेडी हमें पढ़ी थिलु लास्ट क्लास कोल्ड ड्रिप होची से कफ सिरप रा ना कोल्ड ड्रिप एंड कोन तार एथिकल व्यू एस्पेक्ट तार आंसर कोन हे परिबो सब जिनस हम डिटेल पढ़ी थिलु नाउ सिंस ए वीक रे ए आर्टिकल आछि टिके आर्टिकल टाको भी पढ़िबो बहुत सारा तुमको एठी फैक्ट्स एंड माने तुम कोन कहलो पॉइंट्स उडा को पॉइंटर्स उडा को मिल जाओ राइट so it will be very helpful ए पीडीएफ जते बळे मिलिबो ए पर्टिकुलर आर्टिकल टा टिके पढ़ी दबो प्लीज ओके and I do not want to discuss it now because already last class extensively discuss करिछु जो माने भी देखि न प्लीज लास्ट क्लास टू लास्ट आई थिंक आधा घंटा वीडियो टा देखि दबो हमें ए विषय डिस्कशन करिथि ओके आ बाकी जो छोट छोट टॉपिक्स गुडा रहि गला ताको हमें नेक्स्ट क्लास कवर अप करिबो ओके सो ताको हमें नेक्स्ट क्लास कवर अप करिबो ओके एनी डाउट बिकॉज ऑलरेडी 2 आवर ऊपर हे गलानी क्लास मु एते बक बक भी परिबिनी कंटिन्यूअसली आई होप यू अंडरस्टैंड सो जो भी जिनस गुडा रहिला छोट छोट जिनस गुडा नेक्स्ट क्लास हमें नेक्स्ट क्लास रो करंट अफेयर्स माने नेक्स्ट वीक रो करंट अफेयर्स सहित ताको मु इंक्लूड कर ओके जहां भी हमें पढ़िलु किछि डाउट वर्तमान अछि देन यू कैन आस्क और एल्स वी विल क्लोज एनी डाउट any doubt or we should end it no doubt सब बुझा पड़लो थैंक यू आराध्या
Okay. So yeah. So ज्ञान भारतम मिशन आमे रहिलु नेक्स्ट क्लास एटा डिस्कशन करिबा ज्ञान भारतम मिशन टा कोन आ एटा कोन एटलास बेसिकली कोन टिके हम डिस्कशन करिबा मु आकु बस सेमती गाइड देबाकू चाहुनी ज्ञान भारत टाको ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିଟେଲ ରେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଓକେ थैंक यू सुजीता ओके एटा भी गोटे आर्टिकल आस्थिला ए कमिशन ऑफ ओमिशंस सो आपको भी टिके डिटेल रे पढे बिकॉज़ इट इज इंपोर्टेंट एटा हमर फॉर्मर एनसीएम माने नेशनल कमिशन ऑफ माइनॉरिटीज रो चेयरमैन हैला फॉर्मर चेयरमैन जे थिले से लिखिछन्ने एंड ही इज आल्सो द मेंबर ऑफ द लॉ कमिशन ऑफ इंडिया तो नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी ऊपर गोटे आर्टिकल आस्थिला एटा तो सेति में आपको टिके हम डिटेल रे नेक्स्ट क्लास पढिबे ओके आ बाकी मेजर जिंस गुडा हम ऑलरेडी डिस्कशन करले okay so thank you everyone thank you for joining thank you for being with me for 2 hours more than 2 hours I would say thank you